Hello students, welcome to Krishna's Maths. आपण मानकर स्पेशल रिक्वेस्ट क्रमे आज मु बहुत एमसीक्यू नहीं आसी। एमसीक्यू माने लास्ट कुछ 2019, 2020, 2021, 2015, 16, 17 रो सिलेक्टेड मोर देन 100 प्लस एमसीक्यूज सब चैप्टर मिसे की 100 रो अधिक एमसीक्यू नहीं आसी। प्रति चैप्टर अराउंड 10 to 15 एमसीक्यूज नहीं आसी। काहे ना एबर जो तुमरो 2022 पैटर्न आछि 2022 पैटर्न रे हमरो ग्रुप ए रे होछि 50 टा बिट क्वेश्चन 1 मार्क इच। तो एटा गेला 50। तो एटा होछि सबुड बड़ा सेक्शन। आ ए सेक्शन रे जदी भलो कला पिला माने तार एवरेज स्कोर मध्ये भलो हो। आ बी सेक्शन रे अछि बी सेक्शन रे अपन अछि 10 टा क्वेश्चन 3 मार्क इच। तो एटा गेला 30 मार्क्स। और सी सेक्शन रो अछि 4 टा क्वेश्चन 500 मार्क इच 5 into 4 माने 20 मार्क्स। एमती आपनकर पैटर्न हिचे 100 मार्क। हां तो मेन इंपोर्टेंट पैटर्न दा होछि एटा 50 क्वेश्चंस इन या पूर्वरु माने 2021 पूर्वरु एटा 10 टा एमसीक्यू आस्ला आपन एटी कोन ग्रुप ए रे दुटा पार्ट कराई जायछि। ग्रुप ए को पुनी के कोन कराई छै दुईटी पार्ट कराई। जदि देखिन छी मोर 2021 रो पूरा पेपर सॉल्व करके मु अपलोड करछि। 2019 2020 और 2021 रो फुल पेपर फुल सॉल्व पेपर कृष्णास मैथ्स मो चैनल रे अपलोड हेइ अछि। एई मो चैनल रे अपलोड हेइ अछि। एडी जिबे ग्रुप रे जॉइन करिवे इनवाइट लिंक छै ग्रुप रे जॉइन करिवे ग्रुप रे जॉइन करि पूरा पेपर आपन देख पारिबे। पूरा पेपर देखले कोन हो बहुत हेल्प हो बहुत हेल्प मन जाना पड़ियो कि को चैप्टर को टाइप रो क्वेश्चन आछि है ना। 1 मार्क क्वेश्चन कोटा आछि 2 मार्क कोटा आछि 4 मार्क कोटा आछि 6 मार्क कोटा आछि आगे आस्तला एबे सो हे छै 1 to 1 माने एते बेसी चेंज होनी। जोडा 4 मार्क थिला सेडा 3 मार्क कर दे जोडा 6 मार्क थिला सेडा 5 मार्क कर दे आ 1 मार्क 2 मार्क दिटा मिसे के समान 1 मार्क कर पार। तो सब तो इंपोर्टेंट सेक्शन हेला अपन 1 मार्क सेक्शन 1 मार्क सेक्शन रे जे भलो करे तापर ओवरऑल पेपर हमें भलो हिच बोले कहि पारे। ठीक अछि। आ एटा होछि बहुत इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट। आ जे तुम चैनल नुआ अछन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। आ वीडियो भीतर जे पूरा अराउंड 130 140 सॉल्व क्वेश्चंस अछि। सब एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन सब चैप्टर रो अछि। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देन डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर द कर्व एंड प्रोबेबिलिटी होल पोर्शन रो सब चैप्टर रो 15 16 12 13 एमती करी अराउंड 100 प्लस एमसीक्यूज मानसे। आ एटा को देखिबे देखि कि गेन करिया चेष्टा करिवे। आ सेही पैटर्न रागा क्वेश्चन आसु आ बाहर को जो आनिवे सना एही पैटर्न रो क्वेश्चन है राइट। ठीक अछि। एबे वीडियो स्टार्ट करिया। चल व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ A is a 4 cross 5 matrix। यार मतलब A गोटे मैट्रिक्स जार ऑर्डर होछि 4 cross 5 4 cross 5 माने 4 rows and 5 columns are there and B is a matrix such that A transpose B and B A transpose both are defined। A transpose B defined अछि और B A transpose is also defined। then write the order of B। यार ऑर्डर कयार अछि B रो। देखो बेसिक्स कोन अछि if A is a matrix and B is one more matrix A into B is defined only when number of columns of the first matrix column of first matrix must be equal to number of rows of second matrix। ये कंडीशन सेटिस्फाई करियार अछि। देखो A गोटे मैट्रिक्स अछि जार ऑर्डर m क्रॉस n B आ गोटे मैट्रिक्स जार ऑर्डर n क्रॉस p। जदि फर्स्ट मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ रो इक्वल हबो if the number of columns of the first matrix and number of columns of second matrix are equal then A into B will be defined। now what will be the order of the new matrix जो नुआ मैट्रिक्स आछो तार ऑर्डर केते हबो तार ऑर्डर will be m cross p। order of the new matrix will be m cross p। so this is the concept which is going to be used in the sum। आउ कोन कांसेप्ट अछि जदि A गोटे मैट्रिक्स अछि जार ऑर्डर होछि m cross n then A transpose will be one more matrix which order will be n cross m। जब हम ट्रांसपोज करछे रो कॉलम रे ट्रांसफॉर्म हो जाउछ और कॉलम टा रो रही जाउछ तो नंबर ऑफ रोज विल बिकम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बिकम नंबर ऑफ रोज इन केस ऑफ ट्रांसपोज। तो अगर A रो ऑर्डर m cross n तो A ट्रांसपोज रो ऑर्डर होछि n cross m करेक्ट। सो ये दीटा कांसेप्ट हम यूज करिया प्रोडक्ट हेबा पई फर्स्ट रो कॉलम सेकंड मैट्रिक्स रो इक्वल होबार अछि आ ट्रांसपोज रे ऑर्डर इंटरचेंज हो जाउछ। चलो अब देखो A गोटे मैट्रिक्स अछि। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। A is a matrix given of order 4 cross
5. Let B be a matrix of order m cross n. B be a matrix of order m cross n. Now what is defined? A transpose B is defined. Now A transpose order कौन हबो? Change है जो interchange है जो 5 cross 4 into B. B is a matrix of order m cross n. If this product is defined, a product अगर defined हबार अच्छी, then a m रो value 4 सहित equal हेबाक पड़िबो. So m equal to 4. गोटे आंसर मिलगला हमको. n रो value दरकार. Now n value पे out condition अच्छी. B into a transpose is also defined. So B is m cross n. A transpose. What is A transpose? The order of the A transpose will be 5 cross 4. ये भी डिफाइंड अच्छी. ये भी जब डिफाइंड अच्छी, यार कॉलम यार रो सहित इक्वल हो. फर्स्ट रो कॉलम सेकंड रो सहित इक्वल हो. देयरफॉर n इज इक्वल टू 5. तो m रो वैल्यू हो गला 4, n रो वैल्यू हो गला 5. देयरफॉर B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n व्हिच इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5. तो एक ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज जो दुईटा जगह डिफाइंड हबार अच्छी, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर. कहीं ना ए ऑर्डर केते देला 4 क्रॉस 5, बी ऑर्डर मध्य सेम 4 क्रॉस 5 हबाको पड़ियो. देन ओनली बी विल बी डिफाइंड. ओके, सो ये आपका आंसर. ये हो गया करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मैट्रिक्स व्हिच व्हेन एडेड टू द मैट्रिक्स दिस गिव द मैट्रिक्स दिस. राइट द मैट्रिक्स व्हेन एडेड टू दिस. ये मैट्रिक्स को गोटे मैट्रिक्स रे ऐड कले आंसर होची ये. लेट द आंसर विल बी ए. आंसर विल बी ए. देयरफॉर क्वेश्चन कोन दिया आइछि 2 - 3 - 4 और 7. ये गोटे मैट्रिक्स अछि. एथिरे ए मैट्रिक्स टू बी एडेड. लेट द मैट्रिक्स बी ए. लेट द मैट्रिक्स बी ए. जदी ए मैट्रिक्स रे मु ऐड करछि ए वाला मैट्रिक्स मते मिलियो सेकंड मैट्रिक्स 4 1 3 2. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन को जो फर्स्ट मैट्रिक्स अच्छी से गोटे मैट्रिक्स मु ऐड करी सो दैट आई विल गेट अ सेकंड मैट्रिक्स. सो द फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन इज 2 - 3 - 4 7. द मैट्रिक्स व्हिच इज टू बी एडेड इज ए. आउ जो नुआ मैट्रिक्स मिलछो सेटा 4 1 3 2. नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. जदि आपन ए दरकार ए मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड नियंतु, प्लस मैट्रिक्स राइट साइड गले नेगेटिव हे जो. सो दिस इज 4 1 3 2. एटा राइट हैंड साइड ऑलरेडी अछि. ए मैट्रिक्स को हम राइट साइड ने जिबा. सो दिस विल बी 2 - 3 -4 और 7. माइनस करो 4 - 2. 1 minus of -3 will be +3. 3 minus of -4 will be +4 and 2 - 7. Addition subtraction केमती होची corresponding element देखो 4 - 2 -1 minus of -3 3 minus of -4 2 - 7. This is how you can subtract one matrix from another. Now 4 - 2 will be 2, 1 + 3 will be 4, 3 + 4 will be 7, 2 - 7 will be -5. So this is your answer. This is the matrix which when added with the first matrix will give you the second matrix. Next question is if 1 2 3 into A equal to 0 matrix. Now look 1 2 3. This is the matrix. Now what is the order of the matrix? How many rows and how many columns are there? Only one row. देखा जाउछि only one row, 3 column अछि. So the order of the matrix will be 1 cross 3. Order of the matrix will be 1 cross 3 into A equal to right side जो matrix अच्छे से only one element अच्छे, only one. मतलब how many rows and how many columns are there? 1 row and 1 column, 1 row and 1 column, right? अभी A order कौन होगा? What will be the order of A? Let the order of A will be m cross n, m cross n. Now since the product is defined, कहीं ना जब product defined हमारा अच्छी then यार column और यार row equal है बागो पड़ी वो. Therefore m will be equal to n. Sorry, m will be equal to 3. m will be equal to 3. कहीं ना first matrix रो column और second matrix रो row equal है बागो पड़ी. First matrix रो column होची 3, second matrix रो row होची ए दीटा equal है बागो पड़ी. तो m is equal to 3. Correct. Multiply हला परे ये जो हबो this is the order of this matrix. ये कौन बढ़ला 1 cross n बढ़ला. What is the 1 cross 1? तो रिजल्टेंट होची 1 cross 1 हमर बळिला 1 cross n. देखो हमर बळिला 1 cross n, रिजल्टेंट होची 1 cross 1, clearly indicates n is also equal to 1. Therefore n is equal to 1. Therefore what is the order of the matrix here? So what is the order of matrix is m cross n. So that is 3 cross 1. 3 cross 1. Clear? देखो तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो ऑर्डर थिला 1 cross 3. ए रो ऑर्डर हम जानिने हां लिख देबा एमती ये 1 cross 1.
देखो ये 3 माने यार रो 1 हेबार अछि 3 1 हेगला एटा सेम हेबार अछि ए दुटा जोटा बळीबो द रिमेनिंग विल बी ऑर्डर ऑफ दिस तो एटा 1 हेबार अछि कोन तो हेगला m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 1 3 cross 1 will be the order of the new matrix correct. One more question. The question is if 3 2 7x into 5 minus 2 minus 7y equal to 1 0 0 1 then find the values of x and y. Product of these two matrices product of these a data matrix को जब मल्टीप्लाई करिवा हमको 1 0 0 1 आसीबा पड़े मल्टीप्लाई केमति करा होची मल्टीप्लाई एमति करा होची फर्स्ट रो into first column first row first second row second so this is equal to 3 into 5 plus 2 into minus 7 first row first column now first row second column 3 into minus 2 plus 2 into y first row first column then first row second column now come to second row को आसीबा second row first column 7 5 जा 7 into 5 plus x into minus 7 second row first column now second row second column 7 into minus 2 plus x into y and this will be equal to 1 0 0 1 so this is 5 into 3 is 15 2 into 7 is 14 minus 6 plus 2y then 7 5 is 35 7 into x will be 7x 35 minus 7x and this is minus 14 plus x into y and this is equal to 1 0 0 1 now the data matrix equal therefore their corresponding elements are also equal look 15 minus 14 equal to 1 equal therefore this has to be 0 therefore equating the matrices minus 6 plus 2y will be equal to 0 so 2y is equal to 6 therefore y is equal to 6 upon 2 which is 3 y agla 3 now this is equal to minus 14 plus x into y this is equal to 1 तो minus 14 को right side नहीं जावा so x into y is equal to 15 x into y is 15 y 3 तो x into 3 is equal to 15 3 रे cancel करिबा तो therefore x is equal to 5 3 रे cancel कर दो x is equal to 5 therefore final answer the values of x and y are x equal to 5 and y is equal to 3 so this is the answer correct यहाँ पर फाइनल आंसर राइट द मैट्रिक्स प्रोडक्ट a into b कौन दरकार आपको मैट्रिक्स प्रोडक्ट a into b when a and b both are given यदि a b दुईटा जगह दिया है मैट्रिक्स प्रोडक्ट a into b दरकार राइट given therefore a into b is equal to basic multiplication देखो 2008 रास्ते लगा से basic multiplication a is 1 2 3 4 and b is 2002 मल्टीप्लाई कर दो केमती मल्टीप्लाई कर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मतलब 1 into 2 into 2 into 0 तो 1 into 2 will be 2 2 into 0 will be 0 then first row into second column 1 into 0 plus 2 into 2 second row first column 3 into 2 will be 6 4 into 0 will be 0 second row second column 3 into 0 will be 0 4 into 2 will be 8 and this is what your answer is 2 4 6 and 8 एकदम बेसिक क्वेश्चन किसी नहीं है किंतु एग्जाम रे आस्तिले सेति पे आनले आपन मन पाखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज इफ a equal to this 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 and 12 minus 3 1 minus 5 and 17 what is the order of the matrix order of the matrix माने केते रो अछि और केते कॉलम अछि केते रो अछि देखा जाउ क्लियरली 3 रो अछि order of the matrix is order of the matrix is number of rows multiplied by number of columns. What? How many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 4 columns are there. So the order of the matrix will be 3 into 4. याकु 12 लिखी हुई नहीं 12 लिखी हुई नहीं याकु this will be like this is a representation to know how many rows and how many columns of a matrix has. So how many rows are there? 3 rows are there and how many columns are there? 4 columns are there. Now write the this is the first one and the second part is write the value of a13. What do you mean by a13? प्रथम जो 1 अच्छी सेटा होची रो इंडेक्स माने प्रथम रो फर्स्ट रो 3 माने थर्ड कॉलम तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम व्हाट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इज 19 देन a21 21 माने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
second row first column रे केते अछि 35, so this is equal to 35. Then A2 3 2 second row 3 third column, second row third column, what is that? 5/2. And second row fourth column, and what is second row fourth column? Second row fourth column will be 12. Second row fourth column will be 12. So this is your answer. देखो कितने easy question आस्ते हैं exam में. Representation जान नतले कर परियन किसी नाई question रे. Now write the matrix product A into B if A equal to this, B equal to this. Again came in 2008 examination. Now look, product you need to find A into B. Now look at the next question. Question 4. If A is equal to 1 2 0 0 1 2 minus 2 5 3 and verify A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. Look, what symmetric matrix is? If A is equal to A transpose, A is equal to A transpose. जे कोन से मैट्रिक्स आपन दिया है जे मैट्रिक्स ट्रांसपोज बाहर करन और जदी A और A ट्रांसपोज दिड जाक इक्वल हेगला देन A इज सिमेट्रिक. दिस इज द बेसिक थ्योरी. A इज सिमेट्रिक and if A is equal to minus A transpose बाहर करंतु सेतिर माइनस साइन रे मल्टीप्लाई करंतु जदी इक्वल हैला A सहित देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक. एमती चेक करिवे. Okay, now look, fourth is verify A plus A transpose. Now look, given A is equal to 1 2 0 0 1 3 minus 2 5 and 3. Remember, for any square matrix, A plus A transpose is always symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric. This is the property. किंतु एटी तुमको प्रूफ करियो कहियो. एंड फाइंड A transpose. A transpose केंति बाहर करी रो कॉलम बन जो rows are interchange into columns 0 1 3. थर्ड रो बनिबो थर्ड कॉलम minus 2 5 और 3. A and A transpose दुटा जाको A और A transpose हेगला ऐड करो A plus A transpose. ऐड करते 1 plus 1 होगा 2, 2 plus 0 will be 2, 0 minus 2 will be minus 2, 0 plus 2 will be 2, 1 plus 1 is 2, 3 plus 5 will be 8, minus 2 plus 0 will be minus 2, 5 plus 3 will be 8, 3 plus 3 will be 6. Now find the, therefore A plus A transpose यारो ट्रांसपोज बाहर करिए जदी इक्वल हैला A plus A transpose सहित देन सिमेट्रिक, राइट. तो रो विल बिकम कॉलम. तो फर्स्ट रो बनिगला फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनिगला सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनिगला थर्ड कॉलम. देखो सेम आसला. देयरफॉर A plus A transpose is a symmetric matrix. First part चला. Now find the value of A minus A transpose. What is A minus A transpose? 1 minus 1 will be 0, 2 minus 0 will be 2, 0 minus of minus 2. Anything करते ना minus. 0 minus of minus 2 will be plus 2, 0 minus 2 will be minus 2, 1 minus 1 is 0, 3 minus 5 will be minus 2, minus 2 minus 0 will be minus 2, 5 minus 3 will be plus 2, 3 minus 3 will be 0. This is A minus A transpose. Now find the value of A minus A transpose. सेम जदि न हैला माइनस साइन रे मल्टीप्लाई करके चेक करियो. कोन डेफिनेशन A equal to minus A transpose हेबा को पड़ियो, राइट. सो दिस इज 0 2 2 minus 2 0 minus 2 minus 2 2 0. नाउ दिस, नाउ चेक विद दिस 2. ये देखा इक्वल नहीं ना, एक कोटा नेगेटिव साइन रे मल्टीप्लाई करो. माइनस ऑफ A minus A transpose दिस इज इक्वल जतल नेगेटिव रे मल्टीप्लाई करो ए सब पॉजिटिव हेगला. minus 2 0 minus 2 0 2 2 minus 2 0 minus 2 and minus 2 2 and 0. Now this is equal to this A plus A transpose. Therefore A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Okay, if 413 into A equal to minus 4 8 4 minus 1 2 1 minus 3 6 and 3, then find A. एबे देखो केमते सॉल्व करिया क्वेश्चन को. लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स दिया है सेतिर तीन ही रो अछि एक कॉलम. सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 1 एंड दिस इज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. तो गोटे मैट्रिक्स रो जदी ऑर्डर 3 क्रॉस 1 अछि आ गोटे मैट्रिक्स रो ऑर्डर हम जानि ने
एंड रिजल्टेंट ऑर्डर होची 3 क्रॉस 3 यार कॉलम आ यार रो सेम हेबाक पड़ियो यार कॉलम 1 तो द नंबर ऑफ रो 1 हेबाक पड़ियो दिस हैज टू बी 3 काहे ना एटा आंसर राशियो तो आंसर 3 क्रॉस 3 आछ माने 3 तो जो ए मैट्रिक्स अछि हमर ए मैट्रिक्स रो ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हेबाक पड़ियो सिंस therefore A must be a matrix of order 1 cross 3 let A is equal to गोटे रो 3टा कॉलम रहइबो तो A को कोन नै जिबा कंसीडर A B and C 1 row and 3 columns now when you multiply this with A you are going to get this multiply करंतु 4 1 3 first matrix into ABC and this is equal to minus 4 8 4 minus 1 2 1 and minus 3 6 3 when you multiply these two you are going to get this multiply 4 into A will be 4A 4 into B 4B 4 into C is 4C 1 into A will be A 1 into B 1 into C and 3 into A will be 3A 3 into B will be 3B and 3 into C will be 3C कोई भी एलिमेंट को इक्वेट करेंगे ये पटर कोई भी रो कॉलम रो एलिमेंट और लेफ्ट हैंड साइड रो कोई भी रो कॉलम रो एलिमेंट को करस्पोंडिंग इक्वेट करके हमें ए बी सी रो वैल्यू फाइंड करिया किंतु अगर ठीक है ध्यान रे देखियो सेकंड रो रे सिर्फ ए बी सी अछि एट सेकंड रो रे एच अछि देयरफॉर ए बी सी कते मिल गेला a इक्वल टू -1 डायरेक्ट मिल गेला b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1 हालांकि सॉल्व करिए 4a इक्वल टू -4 तो a -1 आसीबो 3a इक्वल टू -3 a -1 कोठू भी आसीबो किंतु ये रो को जतले इक्वेट कर दे हमको सॉल्व करिया दरकार नै ऑलरेडी abc अछि देयरफॉर a मैट्रिक्स कते गेला a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a -1 2 and 1 सो दिस इज योर आंसर एकदम इजी क्वेश्चन किंतु एटा डिसाइड करिया पड़ियो हाउ डू यू डिसाइड कि ऑर्डर ऑफ ए एर ऑर्डर कौन हो सो दैट 4 1 3 को ए रे मल्टीप्लाई कला आपको राइट साइड मैट्रिक्स जेतले हम डिसाइड कर दिले कि ए रो 1 क्रॉस 3 गेला सेतले सम एकदम खत्म प्रॉब्लम सॉल्व करियो बने प्रॉब्लम रे जड़ कोठी सेट देखियो पड़ियो प्रॉब्लम कोठू स्टार्ट हो काहे कि एग्जामिनर हमको से क्वेश्चन टा पचाले सेतिर कोन भाबियो जिंस अछि राइट सेटा उधर दले क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो so that A equal to this is a skew symmetric matrix हमको प्रूफ करियार अछि A skew symmetric matrix रो प्रूफ म कोन कहितले अपन लास्ट वीडियो कहितले if A is equal to minus A transpose then A is skew symmetric अगर आपको प्रूफ करना है जदि आपन प्रूफ करियार अछि कि A skew symmetric आपन एटा प्रूफ करिया पड़ियो कि A is equal to minus A transpose if A is minus A transpose then A is skew symmetric. So let us find the value of minus A transpose and we'll check whether minus A transpose is equal to A or not. A is skew symmetric. Therefore, since A is equal to 0, 3, -4, -3, 0, 2, 4, -2 and 0. This is A. Now therefore A transpose is equal to 0, 3, -4. Row column बन गया -3 0 and 2 and 4 -2 and 0 right now इधर कंपेयर कर देखो ठीक लागु इक्वल लागुनी किंतु खाली माइनस साइन रो टिके गड़बड़ लागु माइनस साइन रो मल्टीप्लाई कर दियो दिस इज 0 3 -4 and this is -3 0 2 and this is 4 -2 and 0 since A is equal to minus A transpose therefore A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. That's it. हेगला proof. Now move to खाली एतिक मन रखिए. A skew symmetric माने कौन proof करेगा? A equal to minus A transpose. हेगला question. One more question. Given 2A plus A B plus C equal to this. A plus B plus C equal to this. A plus B minus C equal to this. Find A B C. तीनटा इक्वेशन आपन दिया अछि मैट्रिक्स इक्वेशन ए तीनटा को सॉल्व करिके ए बी और सी रो वैल्यू बाहर करियार अछि राइट कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1 तो गिवन 2a plus b plus c equal to 1 2 3 0 and a plus b plus c is equal to 0 1 2 1
and a plus b minus c is equal to a plus b minus c equal to 1 2 1 0 एमती तीन टा मैट्रिक्स दिया है. Let this will be equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. 1 minus 2 करंत equation 1 minus 2 implies b b cancel है जो b b c c cancel है जो 2a minus a will be equal to a एपट minus करंत 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 will be 1, 1 minus 0 1, 2 minus 1, 3 minus 2 is 1, 0 minus 1 will be minus 1. So this is the value of a. a दुटा माइनस करें तो a कैंसिल है जो b कैंसिल है जो c plus c will be 2c. तो इक्वेशन 2 minus 3 2 minus 3 कने a कैंसिल है b कैंसिल है c तले जो माइनस c अच्छी साइन से जाएगी प्लस c है जो तो c plus c will be equal to 2c. 0 minus 1 is minus 1, 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 1 is 1 and 1 minus 0 is also equal to 1. This is 2c. Now therefore c is equal to 1 by 2 into minus 1 minus 1 1 1. This is c. So you got the values of a and c. Now what else required? b is required. b मिलियो a और b को सब a और c को सब्स्टिट्यूट कर देले b मिल जिवो. Now c को हम एमती लिख परिबा कि minus 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 को वो भीतर मल्टीप्लाई कर दे. Now this is a plus c. b is equal to from equation 2 what is b? b will be equal to b केमती आसीबो b equal to 0 1 2 1 ये मैट्रिक्स सबसे राइट साइड रे ए थ्रू माइनस करिवे a plus c को ए थ्रू माइनस करिवे a plus c बाहर करंतु a plus c equal to a1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 will be 1 by 2 1 minus 1 by 2 will be again 1 plus 1 by 2 will be 3 by 2 and minus 1 plus 1 by 2 will be minus 1 by 2. So this is the value of a plus c. Substitute कर देंगे. So this is 0 1 2 1 minus ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दो 1 by 2 1 by 2 3 by 2 and minus 1 by 2 माइनस करो तो 0 minus 1 by 2 is minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 2 minus 3 by 2 minus 1 by 2 1 minus of minus is plus 1 by 2 1 plus 1 by 2 will be 3 by 2. So this is the value of b. This is one answer, this is second answer and this is the third answer. These are the values of a, b and c. Correct? Question is construct a 3 cross 2 matrix. मतलब गोटे मैट्रिक्स एमती तैयारी करो जेतिरे तीनटा रो रहइबा और दुईटी कॉलम तीनटी रो और दुईटी कॉलम और तार प्रति एलिमेंट ए कंडीशन को सैटिस्फाई करियो. व्हाट इज दैट? ए आई जे इक्वल टू ई का पावर आई एक्स इनटू साइन ऑफ जे एक्स. लेट ए बी द मैट्रिक्स. लेट ए बी ए 3 cross 2 मैट्रिक्स ऑफ तो आई रो वैल्यू ऑफ ए आई जे. नाउ since 3 rows are there, I will vary from 1 to 3. I कोठी कोठी पर्यंत जो 1 to 3 पर्यंत जो और दुईटी कॉलम अछि तो j कॉलम इंडेक्स तो j will vary from 1 to 2. So while writing the matrix A is equal to, so the first element is A11, second is A12, third is A13. First row, third column. Now the second row माने 2 1 2 2 2 3 एमती लिखियो. Now what is A11? देखो ये हबो A11 I1 J1 तो राइट साइड रे कोन अछि e का पावर I is 1 into x will be x into sin of 1 into x will be x. Second element I1 J2 तो e power x into sin 2x. I को 1 लिखियो J को 2 then e का पावर x into sin 3x. थर्ड एलिमेंट now I को 2 लिखियो J को 1 लिखियो तो e raised to 2x into sin x. This is e raised to 2x into sin 2x and this is e raised to 2x into sin 3x. So this is the matrix. बुझला केमते लिखले? देखो matrix given was A is a matrix of order 3 cross 2. 3 cross 2 माने केमते होबो? एमती होबो. तीनटी रो और दुईटी कॉलम. आ एलिमेंट रो वैल्यू केमते लिखियो? A कंडीशन को सैटिस्फाई करियो. I A I J माने A का पावर I x into sin j x. 1 1 लिखियो माने I को 1 लिखियो J को 1 लिखियो 1 2 लिखियो माने I को 1 J को 2 एंती करियो सारे एलिमेंट्स लिखियो. करेक्ट. नेक्स्ट इफ m of theta
a matrix with variable theta is cos theta, sin theta, minus sin theta and cos theta, then prove that m of x into m of y is equal to m of xy. Now tell me, what do you mean by m of x? What do you mean by m of x? This is m of theta. Theta को substitute करेंगे by x. Theta को substitute करें तो x रे cos x. This will be sin x. This will be minus sin x, and this will be cos x. This is m of x. Now what about m of y? Theta will be replaced by y. So this is cos y, sin y, minus sin y and cos y. Now product of these two. Therefore m of x into m of y equal to multiply cos x, sin x, minus sin x and cos x. This is m of x multiplied by m of y. M of y will be cos y, sin y, minus sin y and cos y. And what about m of x plus y? ये भी लिख के रखो. M of x plus y is cos of x plus y, sin of x plus y, minus sin of x plus y, and this is cos of x plus y. Cos of x plus y, sin of x plus y, minus sin of x plus y into cos of x plus y. Now multiply करेंगे first row into first column. Cos x cos y minus sin x sin y. Then first row second column, cos x into sin y plus sin x into cos y. ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जाने होगा पड़ेगा. Then second row first column, minus sin x into cos y minus cos x into sin y. Then minus sin x sin y minus sin x into sin y plus cos x into cos y. Okay, so this is cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. Cos a cos b minus sin a sin b. कार फॉर्मूला cos a plus b. Sin a cos b plus cos a sin b is sin of a plus b. ये दुईटा जाक टर्म रे माइनस साइनस, तो माइनस साइन को कॉमन नहीं जुए. sin a cos b plus cos a sin b, that is again sin of a plus b. Cos a cos b minus sin b, cos a cos b minus sin a sin b is cos of a plus b. Right, and this is nothing but your m of x plus y, and that is your RHS, and this was your LHS. Clear? Empty type की question भी आस पाए. Now the next question is, if A equal to 1 2 2 2 1 minus 2 x 2 y is a matrix satisfying A into A transpose equal to 9i, then find the values of A and B. So look, given is A into A transpose. What is given? A into A transpose equal to 9i. तो ट्रांसपोज जान सो एक उल्टा कर दो ट्रांसपोज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरा डायगोनल एलिमेंट 1 रो रिमेनिंग एलिमेंट 0. सो राइट 1 2 2 2 1 minus 2 x 2 y. So this is A, and यार ट्रांसपोज करके लिखिए. दिस इज 1 2 2 फर्स्ट रो. सेकंड कॉलम है जो 2 1 minus 2 and the third will be x 2 y equal to 9 into I, and I will be 1 0 0 0 1 0. Identity matrix, diagonal element 1 and remaining all the elements are 0. Now I will multiply करिएगा first row into first column. 1 into 1 2 into 2 2 into 2 4 रहेगा. First row into second column, 1 into 2 2 into 1 2 into 2 will be 4. 1 into x 2 into 2 will be 4. 2 into y will be 2y. Then first row first column, first row second column, first row third column. Now second row first column, 2 into 1 1 into 2 2 into 2 2 into 2 will be 4. 1 into 1 will be 1. 2 into 2 will be 4. 2 into x will be 2x. 1 into 2 will be 2, and minus 2 into y will be minus 2y. Next, x into 1 will be x, plus 2 into 2 will be 4, plus 2 into y will be 2y. Now x into 2 will be 2x plus 2 minus 2y, and then x into x will be x square. 2 into 2 will be 4, y into y will be y square, and this is equal to 9 0 0 0 9 0 and 0 0 9. Right? Now देखो diagonal element सब जगह 1 रहेगा पड़ियो.
ये एलिमेंट होचे 0 अब ये एलिमेंट होचे 0 करस्पॉन्डिंग करेक्ट ये 9 देयरफॉर ये भी 9 यार करस्पॉन्डिंग होचे ये सो दिस इज x plus 4 plus 2y is equal to 0 therefore x plus 2y is equal to minus 4 let it be equation number 1 next one is x plus y plus 4 this is 0 next one more equation 2x plus 2 minus 2y and this is also equal to 0 so 2x plus 2 minus 2y equal to 0 2 रे डिवाइड कर दो nothing wrong 2x minus 2y is equal to minus 2 this is 2 1 and 2 को ऐड कर दो equation 1 plus 2 तो plus 2y minus 2y cancel x plus 2x will be 3x minus 4 minus 2 will be minus 6 x equal to minus 2 x is minus 2 equation 1 रे put करो using in equation 1 तो x रा value minus 2 plus 2y is equal to minus 4 so 2y is equal to minus 2 and y is equal to minus 1 so these are the values of x and y correct if क्वेश्चन देखो 1 plus x x square ये रो रे सेकंड रो x 1 plus x and x square x 1 plus x ये गोटे डिटरमिनेंट दिया है राइट साइड द वैल्यू इज इक्वल टू a plus bx plus cx square plus dx cube plus ex raised to 4 plus fx raised to 5 बड़ा गोटे एक्सप्रेशन दिया है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a रो वैल्यू फाइंड करियो पड़ियो केमती करिया प्रथम नजर जब देखियो क्वेश्चन को एंती लागियो कि पूरा डिटरमिनेंट को हम लेफ्ट साइड रे एक्सपांड कर दवा आ जो वैल्यू आसो डिटरमिनेंट रो ताको राइट साइड सहित इक्वेट करिया x रो कोफिशिएंट को b कहया x स्क्वायर रो कोफिशिएंट को c कहया x क्यूब रो कोफिशिएंट को d कहया x रेज टू 4 रो कोफिशिएंट को e और x रेज टू 5 रो कोफिशिएंट को f कहया आ जो कांस्टेंट टर्म रहयो सेडा को a कहया बहुत टाइम नहीं जो क्वेश्चन जबकि क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क रो क्वेश्चन ठीक बाबू केमती करिया काहे ना मते सिर्फ a दरकार आई नीड द वैल्यू ऑफ a ओनली ए रो वैल्यू मत दरकार मते b c d e f सहित किछि लेना देना नै तो कोन करबी x रो एमती को वैल्यू टा पुट करबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू बी सब्स्टिट्यूटेड सो दैट b c d e and f ये सब गोटे थर 0 हो all will be simultaneously equal to 0 clearly जाना पड़छि जदि मु x को 0 कर देबी जदि मु x को 0 कर देबी ये 0 हो जइबो ये 0 हो जइबो ये और ये all the terms will be equal to 0 so put 0 is equal to x is equal to 0 so the solution is put x is equal to 0 so when you put x equal to 0 ये वाला term कौन है जो 1 plus x will be 1 this is 0 this is 0 this is 0 this is 1 plus 0 which is 1 0 0 0 1 तो ये हो गला तमरो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड देखो x को जतले 0 करे सब 0 हो जो b into 0 c into 0 d into 0 e into 0 f into 0 only you will be left with a राइट अब डिटरमिनेंट जानछो को हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके एक्सपांड कर परिया either you can expand by using first row or by using second row or by using third row or you can expand by using first column second column and third column मु first row रू expand करछि जतले मु first row रू expand करबी what are the sign यार साइन प्लस यार साइन माइनस यार साइन प्लस राइट एक्सपांड करो 1 into this is 1 minus 0 1 minus 0 बाकी दुटा 0 अछि तो रिमेनिंग टू एलिमेंट्स आर 0 तो नो नीड टू एक्सपांड बाकी दुटा एलिमेंट 0 अछि 0 into समथिंग आसो 0 into समथिंग आसो जो कि पूरा 0 हो जो सो दिस इज इक्वल टू a तो 1 into 1 that is 1 so a is equal to 1 this is your answer राइट केबे एमती कर दो पूरा एक्सपांड कर दो गला खेल सरला राइट द सेकंड क्वेश्चन इज इफ एवरी एलिमेंट of a third order determinant of value 8 is multiplied by 2 so there is a determinant of order 3 by 3 गोटे determinant अछि जार order 3 by 3 माने तीनटा रो अछि तीनटा कॉलम अछि आ तार each element equal to 8 सबु एलिमेंट 8 सहित इक्वल जदि एमती determinant को हम 2 रे मल्टीप्लाई करिया then write the value of the new determinant so let us write the question first what it says let a be the determinant each element equal to 8 each element equal to 8
is multiplied by 2. Every element of the third order determinant of value 8 is multiplied by 2. अब याकू 2 रे जदि मल्टीप्लाई करिवा जो नुआ डिटरमिनेंट बनियो तार वैल्यू केते. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. ये डिटरमिनेंट वैल्यू होचे 0. व्हाई? Because if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant becomes 0. So ये दीटा रो देखो, दीटा रो identical या दीटा column identical या एमती वाला सब identical. All the rows and all the columns are identical. ऐसे cases में, in these cases, answer will be 0. या को 2 रे multiply करिवा, 2 रे multiply कले नुआ मैट्रिक्स कौन बनियो? नुआ मैट्रिक्स है जो 16, 16, 16, 16, 16. 16. This is also equal to 0. लेक्का दरकार नहीं, सब 16 है. So this is also equal to 0. So the original determinant is 0. After multiplying 2 also, the new determinant formed also have the value 0. So the answer of the question is 0. 353 and 242 lambda 7 8 is a singular matrix. What a singular matrix is? A matrix is said to be singular if its corresponding determinant value is equal to 0. यार जो determinant value 0 है जो ये matrix टा है जो singular. So this is 353, 242, lambda 7 8. This determinant value is equal to 0. This is given to you, right? If this value is equal to 0, now tell me when the value of a determinant becomes 0. When two rows or two columns are identical, right? जदि ये प्रॉपर्टी हमें जानिनु, जदि ये प्रॉपर्टी हम जानिनु, ये पूरा डिटरमिनेंट एक्सपांड करिवा, फर्स्ट रो को नेबा एक्सपांड करिवा, कोन गुडे वैल्यू आसो एलएचएस रे इक्वल टू 0 करिवा, लैम्डा रे वैल्यू आसो. इफ यू डू लाइक दैट, देन दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. तो एक्सपांड करो, एक्सपांड जदि करिवा, दिस इज 3 into 8 into 4 is 32, 7 into 2 is 14. So 32 minus 14, minus 5 times 8 into 2 is 16, minus 2 into lambda will be 2 lambda, plus 3 into row column charge 7 into 2 will be 14, minus 4 into lambda will be 4 lambda, and this value is equal to 0 since the matrix is singular. So 32 minus 14 will be 18, 18 into 3, minus 16 into 5 will be 80, minus into minus plus 5 into 2 will be 10 lambda, 3 into 14 will be 42, minus 3 into 4 will be 12 lambda. This is equal to 0. 18 3 is 54, minus 80 plus 42, 10 lambda minus 12 lambda will be minus 2 lambda, and this is equal to 0. 54, 42, 96. 96 minus 80 equal to minus 2 lambda. So this is 16 equal to 2 lambda. Let's divide by 2 so that lambda will be equal to 8. Lambda 8. ये अपना आंसर. हमें एमती करवानी. We'll do some more magic. Magic कौन हबो क्वेश्चन रे? Magic एमती हबो since we know कि the value of the determinant is 0. हमू जाना अछि कि determinator value 0. जदि determinator value 0 आमे जानछे तबे एमती भाबिबा determinant value केबे 0 होछि. जेतलो को दुईटा रो या कोई दुईटा कॉलम आइडेंटिकल होछि. Now if you consider column 1 and column 2, column 3, प्रथम दुईटा एलिमेंट आइडेंटिकल 3 3, ये दुईटा एलिमेंट आइडेंटिकल. जदि थर्ड एलिमेंट भी आइडेंटिकल हे गला देन ये ऑटोमेटिक 0 हे गला क्योंकि ऑलरेडी 0 गिवन अछि. देयरफॉर लैम्डा शुड बी इक्वल टू 8. नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्व करे दरकार नहीं. क्वेश्चन देखिए आपण जान दे पारे, राइट? तो 1 मार्क आराम रे मिल गला, राइट? If aij is the element in the ith row and jth column, कौन गिवन अछि? ith row and jth column. What do you mean by that? रो और जो कॉलम इंडेक्स अछि, रो आउ कॉलम इंडेक्स, i होछि रो इंडेक्स, j होछि कॉलम इंडेक्स ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट जोडा अछि सेटा 3/3 ऑर्डर, तो 3 रो और 3 कॉलम, whose value is 1. डिटरमिनेटर वैल्यू केते अछि? 1. If Cij is the cofactor, Aij element और तार cofactor अछि Cij. What is the value of this? एटा क्वेश्चन अछि. बेसिक्स कोन आइते पई देखन. देखन जदि A11 एलिमेंट अछि, A12 and A13. A11 सहित जदि C11 आसला, A12 सहित C12 आसला, A13 सहित C13 आसला,
this is equal to delta. Delta मतलब value of the determinant, right? जदि A11 सहित C11 आसिलानी C12 प्लस A12 सहित C12 आसिलानी C22 एंती कौन आसिला A13 सहित C13 आसिलानी आउ कौन आसिला C23 ये वैल्यू 0 जो एलिमेंट दिया है सही एलिमेंट सहित जदि तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर एलिमेंट आसिला देन द वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आउ को अलग एलिमेंट आसिला देन दैट इज इक्वल टू 0 दिस इज द बेसिक्स यू नीड टू यूज कौन करबा देखो ये क्वेश्चन रा आंसर जण मल्टीप्लाई कर जो A11 into C11 प्लस A12 into C21 प्लस A12 into C12 प्लस A12 into C22 प्लस A13 into C13 प्लस A13 into C23 right this is the value required look A11 C1 आउ A12 C2 आउ A13 C3 this is equal to delta अरेंज करो जो लिखिए A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 गोटे प्लस A12 C21 जोड़ा बढ़ला A12 C22 प्लस A13 and C23 this value is equal to determinant कहीं जो एलिमेंट अच्छे तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर अच्छे डिटरमिनेंट प्लस एटा जो एलिमेंट अच्छे तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर नाइ माने 0 अब डिटरमिनेंट वैल्यू आपन देछि 1 वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 1 तो डेल्टा विल बी 1 so 1 plus 0 is equal to 1 so this is the answer of the question लंबा चौड़ा क्वेश्चन देछि किछि नाइ क्वेश्चन a is the element of ith रो jth कॉलम ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट माने ए आई जे कोन गोटे डिटरमिनेंट एलिमेंट को एलिमेंट ith रो jth कॉलम रो एलिमेंट तार को फैक्टर अछि सी आई जे जदि एमती हला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस तो कोन मन रखिया अछि डिटरमिनेंट जो एलिमेंट नेबे सही एलिमेंट सहित सही एलिमेंट रो को फैक्टर आसला करस्पोंडिंग आसी मल्टीप्लाई होकी ऐड हला देन द वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आउ जदि डिटरमिनेंट रो जो वैल्यू रो तार करस्पोंडिंग एलिमेंट रो को फैक्टर छाडी आउ कोन एलिमेंट आसला देन दैट इज इक्वल टू 0 तो अरेंज कर लिखि देले गोटे सेट आसला डिटरमिनेंट एलिमेंट ता सहित तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर आ गोटे फैक्टर आसीगला 0 तो गोटे आसला डेल्टा गोटे 0 आ क्योंकि डेल्टा गिवन इज 1 डेल्टा 1 अछि तो डेल्टा को 1 पुट कर देले बाकी 0 हो गया क्लियर व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पहले सॉल्व कर देते हैं cos x into cos x minus 1 minus of minus plus sin x into sin x this so cos x into cos x will be cos square x 1 into cos x will be cos x sin x into sin x will be sin square x now this sin square x plus cos square x becomes 1 minus cos x आंसर पड़ा आसला 1 minus cos x आसला now ये जो आंसर आसला यार मैक्सिमम वैल्यू आपन दरकार बुझला पहले कौन दरकार मैक्सिमम वैल्यू नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x जानछो cos x always lies between -1 to 1 cos x रो मिनिमम वैल्यू होछ -1 और मैक्सिमम वैल्यू होछ +1 जदि cos x 1 हबो जदि cos x 1 हबो मैक्सिमम हबो तो 1 - 1 कते गेला 0 हो जियो 0 हो गेला आ जदि cos x -1 हबो cos x जदि -1 हला 1 minus of -1 तो +2 हो जियो तो 0 हो पारे या +2 हो पारे दिस वैल्यू को वैल्यू 1 minus cos x रो वैल्यू either 0 या 2 तो लेस देन इक्वल टू 0 मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 तो यार मैक्सिमम वैल्यू होची 2 मिनिमम वैल्यू पचले 0 ठीक अछि काई ना ये भितर 1 minus cos x एमती गोटे फंक्शन अछि जोथरे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपन जणा अछि कोनटा मैक्सिमम वैल्यू cos x रो मैक्सिमम वैल्यू 1 cos x रो मिनिमम वैल्यू अछि -1 जदि cos x 1 हला एटी cos x को 1 पुट करले 1 - 1 का तासला 0 आसला जदि -1 पुट करले 1 minus of -1 will be 2 तो मैक्सिमम वैल्यू दुटा जगह आंसर आछो एग्जाम रे जोटा पछरे सेटा लिख मैक्सिमम इज 2 मिनिमम इज 0 maximum 2 minimum 0 now in this question you need to find the maximum value so the answer will be 2 only correct दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिवा look write the value of k if this is equal to k into this देखंतु
फर्स्ट कॉलम रे अच्छी a कॉमन, सेकंड कॉलम रे अच्छी a कॉमन, थर्ड कॉलम रे अच्छी a कॉमन. So take a from the first column, a from the second column, a from the third column. Then it is determinant of a1, b1, c1, and this is a2, b2, c2, and this is a3, b3, c3, and this is equal to k times a1, b1, c1, a2, b2, c2, and a3, b3, c3. This determinant and this determinant same cancel होगा. A into A will be a cube. So k is equal to a cube. This is the answer. Correct? Now let's move to one more question. If omega is a complex cube root of unity, then for what value of lambda the determinant this is equal to 0? Determinant value 0 given अच्छे, right? या को expand कर दो. Expand करला वाले ये तीनटा को ऐड करिबा. Column 1 as column 1 plus column 2 plus column 3. So this will be 1 plus omega square. This is omega plus lambda plus 1, and this is omega square plus 1 plus omega. Baki as it is. Lambda 1 1 omega. So this is equal to 0. And since omega is a complex cube root of unity, 1 plus omega square is 0. And this is omega plus lambda plus 1, and this is also equal to 0. This is omega, this is lambda, this is 1, this is omega square, this is 1, and this is omega. This is equal to 0. अब expand कर दो by using first column. First column तो जितना expand करिए यार sign है जो plus minus plus minus plus minus plus minus plus. तो first column रा sign है इटा ये element 0 अच्छी ये element 0 अच्छी तो minus of omega plus lambda plus 1 into यार column और ये row. तो omega minus omega is omega square, minus 1 into omega will be omega square is equal to 0. So omega square minus omega square is also equal to 0. So this is minus of omega plus lambda plus 1. This is equal this into 0. This into 0 equal to 0. This into 0 equal to 0. अभी देखो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया ना, ये ऑलरेडी 0 होला या ऊपर डिपेंड करने माने यहाँ पे 8 ही लैम्डा रा वैल्यू जहाँ है मध्य क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 0 अच्छी ये सब बोले 0 हो जो. सो लैम्डा कौन है जो लैम्डा ऊपर डिपेंड करने. सो लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. तो लैम्डा ऊपर डिपेंड करने डिटरमिनेंट वैल्यू तो सब बोले 0 होती. लैम्डा वैल्यू कौन हो जो whatever may be the value of lambda is, the value of the determinant is always equal to 0. So lambda belongs to any real number. So that is the answer of the first question. Second question 2000 या 2009 रो जो साइड रे लिखा जाउची आपण पर्पल लेटर सेडा होची ईयर जो ईयर रे क्वेश्चन उडा को आपनरो बोर्ड एग्जाम रे +2 साइंस रे आस्तिला. सेकंड क्वेश्चन इवैल्यूएट sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 एंड दिस केमते सॉल्व करिया. r1 + r2 + r3 कर दो. r1 plus c1 plus c2 minus c3. So column 1 is column 1 plus column 2 minus column 3. So this is sin square theta plus cos square theta minus 1. Now second element is cos square theta plus sin square theta minus 1, and third one is minus 10 plus 12 minus 2, and बाकी as it is रख लियो. cos square theta 1, 8 is sin square theta 1, 8 is 12 out 2, right? So look, sin square theta plus cos square theta 1, 1 minus 1 will be 0. Sin square plus cos square 1, 1 minus 1 is equal to 0. Minus 10 minus 2 is minus 12 plus 12 is also equal to 0. So this is cos square theta. Here is sin square theta. This is 12. This is 1, 1, 2, and this value. Since gote column ro sabu element 0, therefore the answer is 0. Yeah, आपनों answer. The value of the determinant is equal to 0 since one of the column is already 0. Question 3, 2008 रे आस्तिला. If omega and omega square are the complex cube root of unity, then write the value of the determinant thus. Almost similar kind of sum. है ना? कौन करिया? सब को ऐड कर दो. C1 as
C1 plus C2 plus C3. So this is cos square x minus 1 plus sine square x minus 2 plus 1 plus 1, and this is omega plus omega square plus 1, and this is minus 1, 1 and omega square, and 8 is sine square x, 1 of 1, right? Now look, cos square x plus sine square x is 1 and 1 minus 1 is 0. Minus 2 plus 2 0. 1 omega plus omega square 0. So the first column is becomes 0. Since the first column is equal to 0, बाकी दुईटा कॉलम ऊपर फरक पड़िबनी जहा ले भी गोटे रो या कॉलम रो सब एलिमेंट 0 होला एक्सपांड करियो तो डिटरमिनेंट वैल्यू केते आसो 0 आसो. सो दिस इज योर आंसर. बहुत बेसिक क्वेश्चंस आछे, डरिवार नै, प्रॉपर्टी मन रखियो और सॉल्व करियो. Now move to the next question. The next question is, so that a plus 1 is a factor of a plus 1, 2, 3. ये को determinant देछि. अब determinant हमें solve करिवा, expand करिक नेबा. आउ देखिबा ये a plus 1 रो गोटे factor. तो first row expand करिवा plus minus plus. So this is equal to a plus 1 into this. A plus 1 into a plus 1 will be a plus 1 the whole square. Minus of minus will be plus. 3 into 6 will be 80. Then minus 2 into 1 into a plus 1 will be a plus 1. Minus 3 into 3 will be 9. Plus 3 times 1 into minus 6 will be minus 6. Minus 3 into a plus 1. This. So this is therefore this is a plus 1 into expand कर दियो आपको a square plus 2a plus 1 plus 16. Minus 2 times a plus 1 minus minus plus 18 plus 3 into minus 6. 3 into minus 6 will be minus 18. 3 into minus 6 will be minus 18, and then minus 18 minus minus plus 3 into a plus 1. This is the value. Now this also can be written as a plus 1 into a square plus 2a plus 17. A plus 1 common निकले minus 2. A to a plus 1 common निकले plus 3. Minus 2 into a plus 1. A plus 1 निकले minus 2 plus a plus 3. And minus 2 into this will be 18 plus 18 minus 18. The plus 18 minus 18 gets cancelled. So this is a plus 1 into a square plus 2a. 17 plus 3 will be 20, and 20 minus 2 will be plus 18. Right? तो आपने एमती प्रूफ करियर अछि कि ये जो डिटरमिनेटर वैल्यू आसो a plus 1 into something. A plus 1 into something. तो आसले a plus 1 into something. Therefore it is a factor of a plus 1. A plus 1 रो गोटे factor. Right? एकदम easy question. If every element of a third order determinant has value 8. गोटे third order determinant अच्छी. तार each element is 8. So this is 8, 8, 8, 8, 8, 8, and 8, 8, 8. Is divided by 2. Then what is the value of the resultant determinant? So सबो element को हमें 2 रे divide करते हैं. So this will be 4, 4, 4. This is again 4, 4, 4, and this is again 4, 4, 4. Now what will be the value of the determinant? Obviously 0. कहेंगे ना ये दीटा डिटरमिनेटर दीटा रो या दीटा कॉलम तुम्हारा आइडेंटिकल है, कोई भी दीटा कॉलम अगर दीटा रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 by the property of the determinants. Right? Now move to the next question. What the next question is, if all the elements of the two diagonal of a third order determinant are 0, there is a third order determinant and all the elements of the diagonal are 0, like diagonal elements of 0 also. Now these are 0 and these are also 0. Let this will be A, B, C and D. Right? Then what is the value of the determinant? Value of the determinant will be always equal to 0. या कोई expand करके check करो 0 है जो. This is 0 into anything is 0. Next minus B into A into 0, 0 into D is 0, 0 into A into C minus 0 into 0 is 0. If the diagonal elements of any determinant is 0, then the value of the determinant also equal to 0. Now look,
if the cofactors and minus of each element of a second order determinant, there is a second order determinant, let the determinant be a, b, c, d. Let the determinant be a, b, c, d. Cofactors and minors of each element of a second order determinant are the same. कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई भी वैल्यू लो. If you take any value of a determinant, its minor and cofactor is same. Then what is the value of the determinant in the second row and first column? Second row, first column. Value of the second row, first column. So second row, first column is C. So minor is C. Minor will be B. Minor तो जो एलिमेंट और माइनर अपन बाहर करिए, जो एलिमेंट और माइनर बाहर करिए तार रो और कॉलम साइड देबे तो B हे गेला. नाउ व्हाट विल बी द कोफैक्टर इक्वल टू -1 रो पावर 2 + 1 into B which is equal to -B. Minor हे गेला B और कोफैक्टर हे गेला -B. Now given in the question that minor of each element is equal to the cofactor. Each element or minor और cofactor दे जण इक्वल, माने minor हे गेला B और cofactor हे गेला -B दे जण इक्वल. minus B को इनपुट नहीं किया सुन तो लेफ्ट हैंड साइड में 2B is equal to 0, therefore B is equal to 0. Then what is the value of the second row first column? Second row first column रा element value होची 0. What is the value of the element in the second row and first column? Second row first column माने 0 value बचाची, right? If the cofactor and minor of each element of second order determinant are the same, what is the value of the element in the second row and first column of a determinant? Second row first column माने C रो value, B रो value 0 जेमती आसले C रो value मते सेम तो 0 आसो. C रो value केमती 0 आसो, B रो minor cofactor आनी इक्वल कर दे. B कोन होची M12 हे गेला C, C12 हे गेला -C, ए दिटा इक्वल, therefore C is equal to -C, 2C equal to 0, C equal to 0. All the values will be 0. Correct? जमते B 0 आसले सेमते C 0 आसो. कोई भी वैल्यू पूछेगा, जो भी वैल्यू पचारिबो तार वैल्यू 0 आसो. Right? Let A and B be two mutually exclusive events such that P of A equal to 1/2 and P of B equal to 1/3. For mutually exclusive event, definition मन रखो. If A and B are two mutually exclusive events, if A and B are two mutually exclusive events, for mutually exclusive event, probability of their intersection will be equal to always 0. तो A रो वैल्यू probability of A and probability of B या ऊपर डिपेंड करियो अगर mutually exclusive तो intersection always equal to 0. सॉल्व करिया दरकार नहीं, whatever may be the value of A and B is. आउ या सहित आउ दुटा कांसेप्ट मन रखिए, अगर म्यूचुअली एक्सॉस्टिव हो देन A यूनियन B will be equal to 1 for mutually exhaustive events. For mutually exhaustive events, their union will be equal to 1 and the probability of A equal to probability of B and both will be equal if equally likely events. For equally likely events, if A and B are equally likely, then their probabilities are equal. If they are mutually exhaustive, then union equal to 1. If they are mutually exclusive, intersection will be 0. 80 कौन पचार दिला mutually exclusive, therefore intersection 0. ये भी पचारी पारे, ये भी पचारी पारे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिया. One card is drawn from a pack of 52 cards. गोटे कार्ड रो पैकेट अच्छे सेते 52 कार्ड्स अच्छे, सेथु गोटे कार्ड सेलेक्ट कराला. राइट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर ए किंग और ए स्पेड. लेट P of A probability that the card is king and probability of B याकू कौन कंसीडर करिया, probability that the card is a spade, either a king or a spade माने probability of A union B, either or माने probability of A union B. एंड यार फॉर्मूला पे हमको एंड दरकार. एंड माने ऐसे प्रोबेबिलिटी एमती प्रोबेबिलिटी
जेथिरे दुईटा जगह आसो दुईटा जगह माने किंग एंड स्पेड तो किंग आसबार प्रोबेबिलिटी केते हाउ मेनी किंग्स आर देयर 4 किंग्स आर देयर आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स 52 कार्ड्स तो गोटे किंग मिलवार प्रोबेबिलिटी होची 4/52 व्हिच इज 1/13 स्पेड केते अछंती स्पेड अछंती 13 स्पेड केते 13 ईच टाइप ऑफ कार्ड 13 हार्ट 13 डायमंड 13 क्लब 13 स्पेड 13 तो ए गोटे स्पेड सिलेक्ट करिवार प्रोबेबिलिटी होची 13/52 तो 13 रे कैंसिल करले 1/4 ना इंटरसेक्शन माने एक कार्ड व्हिच इज ए किंग एंड ए स्पेड कार्ड टा किंग भी हेतियो स्पेड भी हेतियो तो स्पेड रे केते किंग अछंती स्पेड रे गोटे किंग अछंती सो दिस विल बी इक्वल टू 1/52 तो ए यूनियन बी रो प्रोबेबिलिटी होची p of a plus p of b minus probability of a intersection b this is the formula so what is probability of a is 1/13 probability of b will be 1/4 a intersection b will be 1/52 सिंप्लीफाई कर दो ए दुईटा प्रथम ऐड कर दो तो 4 plus 13 will be 17 17/52 minus 1/52 17 minus 51 will be 16 divided by 52 4 रे कैंसिल करबा 4/13 तो either or कहले a union b एटलीस्ट कहले भी a union b and जदि कहबे बोथ a and b कहले a intersection b ए दुटा मन रखे either or माने a union b and कहले a intersection b और a union b ला अनिवार्य फार्मूला एटा p of a union b equal to p of a plus p of b minus p of a intersection b by addition theorem of probability this is by addition theorem of probability ध्यान से सुनिए प्रैक्टिस करिए ठीक अछि नेक्स्ट राइट द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे considering that year is not a leap year जदि leap year नहीं year will be having year of 365 days out of this 365 one day is to be selected both the birthdays तो 365 रु गोटे डे को सेलेक्ट करिवा इन हाउ मेनी वेज 365 c1 so 365 राइट तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी केते जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 365 रु गोटे सेलेक्ट करिवा डिवाइड बाय 365 दुई जन पे सिलेक्ट करछ 365 c1 into 365 c1 तो न्यूमरेटर रहेगा 365 डिनोमिनेटर रहेगा 365 द होल स्क्वायर राइट एक गोटे 365 कैंसिल होला 1/365 एते सब न करिवार अछि तो ता कोन करिए गोटे डे सिलेक्ट करिवार अछि आउट ऑफ 365 काइना सेही दिन रे दु जनर बर्थडे आसीओ both a and b having the same day as birthday दुई जन जगह बर्थडे गोटे दिन रे आसीओ तो 365 रु गोटे दिन सिलेक्ट करियो 1/365 दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी करेक्ट सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर बोर्ड रे आसबे क्वेश्चन देखो जदी ए क्वेश्चन को देखिए दिस इज द क्वेश्चन व्हिच केम इन 2014 एग्जामिनेशन व्हाट द क्वेश्चन सेज क्वेश्चन कोन कोसे देखंतु इफ एन इवेंट a is independent to itself independent event रो डेफिनेशन कोन a intersection b equal to p of a into p of b this is what is called the definition of independent events two events are independent if the probability of their intersection equal to probability of a into probability of b so what he says a is independent to itself a को independent since a is independent to a is independent to a therefore by definition कोन कहूची दुईटा इवेंट रो इंटरसेक्शन is equal to p of a into p of a okay if an event independent to itself then what is p of a रो वैल्यू पचाछि केमति करबा देखंतु p of a is independent to p of a तो p of a intersection is always p of a intersection a कोन होछि a होछि this is equal to p of a into p of a will be p of a the whole square p of a को सेपट नहीं जानते p of a the whole square minus p of a will be equal to 0 p of a को कॉमन नहीं जिबा then p of a first term रो minus second term रो असला 1 equal to 0 तो either p of a equal to 0 or p of a minus 1 is equal to 0 that is p of a is equal to 1 तो probability of the event is either 0 or the probability of the event is or 1 either it is 0 or it is 1 when the event a is independent to itself
दुईटा इवेंट जब इंडिपेंडेंट हुए से इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी से इंडिविजुअल प्रोडक्ट रो प्रोबेबिलिटी सहित इक्वल हो या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी रो प्रोडक्ट सहित इक्वल हो तो ए इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए इंटू ए नाउ ए इंटरसेक्शन ए विल बी ऑलवेज ए सहित ए को इंटरसेक्ट करियो ए आसीबो तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए cos स्क्वायर ए को एपट नहीं जान तो फैक्टराइज कर देन तो पी ऑफ ए रो वैल्यू आसीबो 0 और 1 ठीक अछि नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 6 पी ऑफ बी इक्वल टू 0.4 and P of A intersection B equal to 0.2, then find the value of P of B by A. P of B by A, what is the formula? P of B by A equal to probability of A intersection B or B intersection A divided by probability of A. This is the formula. A formula मन रखिए जदि ऊपर B तले A हला ऊपर B तले A हले denominator A हबो जदि ऊपर A हबो तले B हबो तो denominator probability of B हबो numerator will be always the intersection of both. Now probability of A intersection B is given as 0.2 and probability of A is given as 0.6. So the answer will be 1.3. देखो तो गोटे गोटे दी स्टेप आंसर came in 2013 and it's a textual question. तो एलिमेंटरी टेक्स्ट बुक रो क्वेश्चन था ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटमोस्ट 11. एटमोस्ट 11 मतलब व्हाट डू मीन बाय दैट? बेसी रु बेसी 11 आसो माने 11 या ताठू कम आसो. ओके व्हेन टू डाइस आर थ्रोन जेतले हम दुईटा डाई को थ्रो करबा तो n of s केते हिजो n of s इक्वल टू 36 एलिमेंट्स. n of s विल बी 36 एलिमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 12 एटमोस्ट 11 इक्वल टू कोड आसीबोनी सब आसीबो 11 ताठू कम सब आसीबो टिल 0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 सब आसीबो कोन आसीबोनी 12 आसीबोनी. तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1. 1 रो जदी प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 12 आसीबार प्रोबेबिलिटी माइनस कर दवा तो कोन आसीबो 12 आसीबोनी. 12 आसीबोनी माने कोन आसीबो 11 टू जेकी 0 पर्यंत आसीबो. तो 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 12. सम 12 हबो गोटिए केस कोन तक 6,6. This is the one case only when you will get the sum as 12. Sum 12 मिलियो गोटिए केस out of how many cases 36 cases. तो sum 12 आसीबार प्रोबेबिलिटी होची 1/36. तो 12 हमको दरकार नहीं तो 12 को 1 रो हमें माइनस कर दो तो 36 minus 1/36 this will be equal to 35/36. This is your answer. Okay, next question. Next question is P of A equal to 0.6. P of B by A. Look, what is given? Given P of A is equal to 0.6. P of B by A. P of B by A is equal to 0.5. Find A union B and A and B are independent. Huh? Since A and B are independent, therefore P of A intersection B will be equal to P of A into P of B. This is one. And P of B by A is equal to P of B by A is equal to P of B. And this is equal to 0.5. So these two are the definition of independent event. Independent जदि B independent B A को independent अछि या A B को independent अछि B A ऊपर depend करिवने तो B of A के कोन हेजबो B हेजबो जदि A by B थांता तो A ही थांता. इंटरसेक्शन प्रोडक्ट सहित इक्वल हेजबो तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी मिल गेला P of B by A मिल गेला. Then what you need to find? You need to find is P of A union B और यार फार्मूला कोन P of A plus P of B minus P of A intersection B and intersection equal to product. What is P of A? P of A equal to 0.6. What is P of B? P of B equal to 0.5. P of A intersection B will be equal to P of A into P of B. So P of A union B equal to 0.6 plus 0.5 is 1.1. Is 1.1 minus P of A will be 0.6 into P of B. P of B is equal to 0.5. So this is equal to 1.1 minus 0.6 into 0.5 will be 0.30. So 1.1 minus 0.30 will be minus कर दियो तो 1.10 एमती कर दियो 0.30 एमती कर दियो तो 0 11 minus 8 तो 0.80. So or 0.8. This is probability of A union B. Correct?
So this is your answer. Now come to the next question. What the next question says? A bag contains 7 white 9 black balls. गोटे bag अच्छे जो 7टा white ball अच्छे और 9टा black ball अच्छे. If a ball is drawn at random, one ball is to be selected at random. What is the probability that it is white? How many white balls are there? Look, n of s is equal to 16 na? Total 16 balls अच्छे. 16 to गोटे select करिए तो n of s equal to 16. Now what is n of a? Required is 7 white balls, and one white is to be selected out of 7 in how many ways? 7c1, which is equal to 7, and p of a will be equal to n of a divided by n of s. Now what is n of a? N of a equal to 7, n of a equal to 16. Simple as that. बुझीगला? आगु को बढ़िबा. Next question करिबा. 2 dice are rolled in succession. दीटा die को आमे गोटे पर गोटे रोल कले. In succession मतलब one after the other. Find the probability that the first die shows at most 3. At most 3 माने? At most 3 माने maximum 3. Maximum 3 माने 3 या उससे कम. ठीक है. And the second shows an odd number not less than 3. Odd number not less than 3. What do you mean by that? Odd number होबो किंतु 3 टू कम होबो नहीं. मतलब 3 होबो या 3 टू अधिक होबो. n of s कहते हो. n of s is equal to 36. 2 dice are rolled in succession. n of s will be 36. Find the probability that first die shows at most 3. तो n of a कहते हैं जो at most 3 माने 1 है पारे, 2 है पारे, 3 है पारे. बेसी रु बेसी 3 माने 3 या ताटू कम 1 2 3 है पारे. And the second die shows an odd number not less than 3. Not मतलब 3 टू छोटा होबनी. 3 है पारे या टू बड़ा है पारे. 3 है पारे या टू बड़ा भी है पारे. बड़ा मतलब 5 होबो. 2 सहित 3 होबो या 2 सहित 5 होबो. 3 सहित 3 होबो या 3 सहित 5 होबो. So these are the total number of cases. ठीक है. फर्स्ट थ्रो रे कोन हला एटमोस्ट 3. एटमोस्ट 3 माने बेसी रु बेसी 3 होबो. माने 3 या ताटू कम होबो. माने 3 है पारे, 2 है पारे, 1 है पारे. लिख देले हम. सेकंड डायरे कोन आसीबो गोटे ऑड नंबर आसो किंतु से 3 रु कम होबो. 3 रु कम होबो माने 3 होबो या टू बेसी होबो. या टू बेसी होबो माने ऑड नंबर 1 टू 6 भितरे 3 टू बेसी कोन कोन रहले 3 टू 3 या 3 टू बेसी. दैट इज 3 एंड 5. तो 1 सहित 3 1 सहित 5. तो टोटल ये कितने केसेस है? एटा हेगला 6 केस. राइट. या को अपन ए लिख दियो तो काहे ना एटा सेट अछि. राइट. ये सेट अछि. अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कोन लिखबे? n of a. n of a इक्वल टू 6. तो व्हाट इज p of a? P of a is equal to n of a divided by n of s. n of a equal to 6, n of s equal to 36. 6 upon 36 will be equal to 1 upon 6. तो 1 by 6 अपन को आंसर. क्वेश्चन खाली पढ़ी की बुझिए. एटा डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी. इफ ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस इन सक्सेशन. गोटे डाई को हमें दी तरह थ्रो कले 1 by द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज 8. यदि दी तरह डाइस को थ्रो कले n of s के गेला 36 and sum of the numbers is 8. Sum of the numbers 8 माने कोटा कोटा 8 2,6 है पारे 6,2 3,5 5,3 4,4. only these cases. 1,7 in this कहबे नहीं काहे डाई रे 7 आसु. ठीक अछि. तो 1 2 3 4 5 how many cases? 5. आउ को केस अछि चेक कर. 2 6 6 2 दुटे जा केस 8 5 टोटल 3 5 5 3 या 4 4 5 6 2 अधिक होबनी. राइट. तो टोटल 5 केसेस. दिस इज n of a equal to 5. तो p of a will be equal to n of a divided by n of s. So n of a will be 5, n of s will be 36. So 5 upon 36 will be the answer. So p of a is given as 1 by 2, a intersection b 1 by 3. What is the probability of a minus b complement? So look, कौन given अच्छी? Given अच्छी कि probability of a is equal to 1 by 2 and p of a intersection b, and this is equal to 1 by 3. Then what is the probability of a minus b complement? So a minus b complement is equal to 1 minus probability of a minus b. So this is 1 minus probability of a minus b is probability of a minus probability of a intersection b. So दुईटी formula use होची. Probability of कोई भी सेट रो जे कोन सेट रो कॉम्प्लीमेंट अछि माने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कर देबे. आ a माइनस b रो प्रोबेबिलिटी होची a माइनस तारा कॉमन एलिमेंट माने इंटरसेक्शन एलिमेंट. सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 1 by 2, b is 1 by 3. तो 1 minus 1 by 3 will be equal to 3 minus 2 upon LCM 6. So this is equal to 1 minus 1 upon 6 and that is equal to 5 by 6. एटा आपनकर आंसर.
So probability of A minus B complement equal to 5/6. 1 mark question 2010 रे आस्थिला exam. जिबा next question को. What the next question is? What is the probability of getting exactly 2 heads in a single toss of unbiased coins? 2 unbiased coins. दुईटा coin हमें toss करते. Since 2 coins are tossed, sample space कौन होगा? H head tail, tail head, tail tail. This is what the sample space. दुईटा head ही पारे या head tail, tail head, head head. So therefore n of s is equal to 4. How many heads required? Exactly 2 heads. How many heads? 2 heads. So how many such cases are there? गोटे केस अच्छे तो n of a equal to 1. So p of a will be equal to p of a माने दुईटी हेड मिलवार probability. This will be n of a divided by n of s. So n of a is 1, n of s is 4. So the answer is 1/4. A and B are two events such that P of A is equal to 3/8, A intersection B is equal to 1/4. So A intersection B complement. So probability of A intersection B complement equal to co-setter complement नहीं A रहा है. So A रू तारा intersection minus करे. A minus probability. This is the formula. एटा मन रखे ये आपन को formula. A intersection B complement is A minus माने दुईटी सेट अच्छी गोटे सेटर कॉम्प्लीमेंट अच्छे आ गोटे सेटर कॉम्प्लीमेंट नाही तो एमती केस रे कोन करिए जो सेटर कॉम्प्लीमेंट नाही सेही थिरु दुईटा जगर इंटरसेक्शन माइनस करिवे तो को सेटर कॉम्प्लीमेंट नाही ए रे नाही तो A माइनस दुईटार इंटरसेक्शन तो A is given as 3/8 A intersection given as 1/4 so this is equal to 3/8 minus 2 रे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देबे तो ये बन जाएगा 2/8 3/-2 will be 1/8 so this is the answer. So this is again a 1 mark question. So देखो the radius of a spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.2 meter per second. Let r be the radius of the soap bubble. Let r be the radius. So given dr by dt. dr by dt 0.2 meter per second. The rate of increase of surface area when its radius is 7 given r is equal to 7. This is also given 7 centimeter. So the rate of change of surface area. The surface area of sphere is s is equal to 4 pi r square. Rate of change of surface area दरकार माने ds by dt. ds by dt माने d by dt of s रो वैल्यू कौन अछि 4 pi r square. So this is equal to 4 pi into derivative of r square is 2r into dr by dt. Kind r square derivative with respect to r करिवे into r derivative with respect to t is dr by dt. So 4 into 2 8 pi r into dr by dt. Now value substitute कर दो 8 into pi into r which is 7 dr by dt will be 0.2. 8 7 is 50 6 pi into 0.2 multiply कर दो 2 रे 2 6 is 12 2 5 is 10 plus 1 will be 11 गोटे पॉइंट साइड के डेसिमल पके देबे पाई एंड एरिया होछि तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड राइट. Write the equation of tangent to the curve y equal to mod x at the point -2 to 2. Point is -2 to 2 नेगेटिव पॉइंट अच्छे. सो फॉर x लेस देन 0 जदि x रो वैल्यू लेस देन 0 होबो y will be equal to जो mod x अच्छी that will be equal to -x. जदि ग्रेटर देन 0 हैला प्लस x है ठीक अच्छे. नाउ dy by dx कहते हो dy by dx equal to minus derivative of x is 1. Write the equation of tangent. Therefore equation of the tangent is point कहते अच्छे एटा अच्छी पॉइंट और ये है गला सोट स्लोप तो y minus y1 equal to m into x minus x1. एटा होता है इक्वेशन ऑफ tangent. तो y minus y1 कहते 2 equal to m कहते -1 into x minus of -2 will be +2. So this is y minus 2 equal to minus x minus 2. सबको लेफ्ट साइड नहीं जाए minus x एपटा आसला x plus y minus 2 कैंसिल हो गला. Therefore this is equal to 0. आ गोटे पार्ट जदि करबा अछि सेटा भी कर परिबे at x greater than 0 जदि x रो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो y equal to +6 है जो. Therefore dy by dx कहते हो जो dy by dx माने x रो डेरिवेटिव that is 1.
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन हो -1 जो स्लोप अच्छे -1 ता जगह +1 हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equal to m into x minus x1 पॉइंट कौन अच्छे y minus 2 equal to m माने 1 x minus of -2 एगला +2 तो y minus 2 equal to x plus 2 सबको राइट हैंड साइड ले जो x minus y 2 plus 2 will be 4 and that is equal to 0 so this is the equation of tangent इक्वेशन ऑफ टेंजेंट माने कोन टेंजेंट माने स्ट्रेट लाइन पॉइंट अच्छे स्लोप अच्छे आ जदि पॉइंट अच्छे स्लोप अच्छे पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला लगा देबे y minus y1 equal to m into x minus x1 what is the acceleration of the particle at the end of 2 seconds when the moves along the curve given equation of the curve is given s is equal to what is s displacement of the particle root t plus 1 ठीक है now displacement can जानिबे प्रथम velocity जानिबे velocity v is equal to ds by dt s रो डिफरेंशिएशन करिवे तो d by dt of s माने root t plus 1 root t रो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t will be 1 by 2 root t आ 1 रो डेरिवेटिव हो गला 0 ठीक है दिस इज v नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू acceleration is dv by dt acceleration is a equal to rate of change of velocity which is dv by dt and that is d by dt of v मतलब 1 by 2 root t 1 by 2 constant बाहर चली गला t को t रो पावर हे गला -1 by 2 डिफरेंशिएट करिवा -1 by 2 ठीक है n into t raised to n minus 1 so this is equal to -1 by 4 into t रो पावर -3 by 2 ये होचे एक्सेलरेशन नाउ a is equal to -1 by 4 t रो पावर -3 by 2 1 upon कर दे +3 by 2 now when t is equal to 2 a will be equal to -1 divided by 4 into t रो value 2 रो पावर 3 by 2 so this is equal to -1 divided by 4 into 2 का पावर 3 by 2 2 रो पावर हाफ के थेगला √2 और √2 रो क्यूब हो गला 2 √2 so this is -1 upon 4 into 2 हो गला 8 √2 and this is your answer determine the point on the curve एक कर्व ऊपर आपन पॉइंट दरकार what is the equation of the curve is given equation of the curve is y is equal to log x given y is equal to log x this is the equation of the curve at which the tangent will be parallel to the chord joining these two tangent parallel हो का हो ये जो chord जो दुईटा पॉइंट को जॉइन करछ ताको पैरेलल हो तो chord रो स्लोप जदि tangent chord को पैरेलल होछि दुईटा लाइन tangent गोटा लाइन chord गोटा लाइन दुईटा लाइन एक दूसरे को पैरेलल जदि दुईटा लाइन पैरेलल होछि से दुईटा रो स्लोप इक्वल हो को दुईटा रो tangent रो स्लोप और pq रो स्लोप tangent रो स्लोप माने dy by dx let us find dy by dx differentiating with respect to x derivative of y is dy by dx and derivative of log x is 1 by x okay now slope of line joining p and q slope of line joining p 1, 0 and q e, 1 is y2 minus y1 1 minus 0 this is 1 1 minus 0 divided by e minus 1 okay so numerator is 1 and denominator is e minus 1 since tangent parallel to pq therefore slope of tangent equal to slope of pq slope of tangent को मु tgt लिखु छै ना short form slope of tangent equal to slope of pq now what is the slope of tangent रो slope हो छै 1 divided by e minus 1 equal to slope of pq हला 1 by x माने tangent रो slope हेगला 1 by x pq रो slope हेगला 1 by e minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे x is equal to e minus 1 x पळासला 80 x जगह e minus 1 को यूज करबे तो y is equal to log of e minus 1 ठीक আছে तो पॉइंट कथे हेगला पॉइंट हेगला e minus 1 comma log of e minus 1 this is the point and this is your answer ठीक है तो ये 2009 रा आसला किछि नै क्वेश्चन गोटे दिया आइले गोटे कर्व अछि y equal to log x
बोलছি ये जो कर्व पर जो टैंजेंट हबो से PQ लाइन को पैरेलल हो, ठीक अच्छे। तो कर्व पर जो टैंजेंट से जब PQ को पैरेलल होची, टैंजेंट रो स्लोप और PQ रो स्लोप दुईटा जाको इक्वल हो। तो टैंजेंट रो स्लोप बाहर कले, PQ रो स्लोप बाहर कले, दुईटा जाको इक्वल कर देले और सॉल्व कर देले, ठीक अच्छे। नाउ लेट्स मूव टू द second question. Find the point. Second question is find the points on the curve x is equal to a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta at which tangent parallel to x axis. Tangent जदि x axis को parallel होबो ता माने tangent रो slope और x axis रो slope equal होबो. Now x is given in the form of theta. Given x is equal to a into theta minus sin theta. Now let us find dx by d theta. Why? Because these are given in parametric form. X को theta form रे दिया है parametric form. A into derivative of theta is 1, derivative of sin theta will be equal to cos theta. And what is y? Y equal to a into 1 minus cos theta. This is y. Now what about dy by d theta? Dy by d theta is a into derivative of 1 is 0 minus cos theta and derivative of cos theta is minus sin theta. So this will be plus sin theta. Therefore dy by d theta equal to a into sin theta divided by a into sin theta. So dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by d theta and divided by dx by d theta. dy by d theta can dy by d theta is a into sin theta. Dx by d theta is a into 1 minus cos theta. A gets cancelled since tangent parallel to x-axis. Tangent x-axis को parallel है, therefore slope of tangent equal to slope of x-axis. Slope of tangent equal to slope of x-axis. Slope of tangent माने sin theta divided by 1 minus cos theta. This is slope of tangent. Slope of x-axis is 0. Multiply कर दो, therefore sin theta equal to 0. So theta is equal to 0. जब थीटा को 0 पुट करिए x कौन आसो, x इज a into 0 minus sin 0. So this is equal to a into 0, sin 0 is also 0. So a into 0 will be 0. And what about y? Y equal to a into 1 minus cos 0 and cos 0 equal to 1 minus cos theta. So this is a into 1 minus cos 0 degree. Theta 0 ना, cos 0 1, cos 0 है 1 minus 1 है 0. So this is 0. तो point कहते हैं x is 0, y is also equal to 0. बुझिगला, x and y both are 0. कौन कली बुझला, x is given in parametric form, y also is given in the parametric form. You need to find the value of the point if the tangent is parallel to x axis. माने tangent x axis को parallel से, tangent जब x axis को parallel होगा, tangent रो slope और x axis slope equal होगा. Slope of tangent is dy by dx. Slope of x axis is 0. तो dy by d theta dx by d theta बाहर करिए, सेटा को डिवाइड कर देले dy by dx आजो, ताको 0 सहित इक्वेट कर देले. तो sin theta 0 हो गेला, माने एक theta 0 हो गेला. थीटा को x और y पुट कर देले, once in x and then in y पुट कर देले, आंसर पड़ा. ठीक है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. दिस आल्सो केम इन 2007. एई टाइप रो क्वेश्चन आपन मानु आसी. नेक्स्ट, write the slope of the tangent to the curve. Look, the given equation of the curve is y equal to root 3 into sin x plus cos x. This is y. And the point is pi by 2 comma root 3. So slope of the tangent. Slope of the tangent is dy by dx. Now let us differentiate. Root 3 into derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x. So this is dy by dx, which is slope of the tangent. At what point you need it? So dy by dx at pi by 2 comma root 3. So there is no y, तो y pi by 3 यूज करिया नहीं हमें, x जगह pi by 2 यूज करिया. root 3 into cos pi by 2 minus sin pi by 2. So this is equal to root 3 into cos 90 0 minus sin 91. So root 3 into 0 will be 0 minus 1 and that is equal to minus 1, and this is your answer. Yes. Write the interval in which the function sin square x minus x is increasing. जदि गोटे function increasing होची ता माने तार first derivative greater than 0. So consider that let f of x will be equal to sin square x minus x. So f dash x will be equal to
साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x इंटू cos x माइनस 1, 2 sin x इंटू cos x माइनस sin 2x माइनस 1. ठीक अच्छे. Interval in which this is increasing, since f of x is increasing, therefore f dash x will be greater than 0. Sin 2x minus 1, this is greater than 0. Now check, sin 2x always lies between minus 1 to plus 1. Okay, so what about sin 2x minus 1 less than equal to minus 1 less than equal to 1 minus 1. So sin 2x minus 1 less than equal to 0 and more than equal to minus 2. So this value will be always less than 0. Minus 2 ru 0 bhitar rahibo, and for no value of it, therefore this value cannot be greater than 0. ये value केबे 0 ru बेसी हबन. जदि sin 2x 1 हला, if sin 2x is 1, then only this is equal to 0. This cannot be greater than 0. जदि sin 2x 1 हेगला तो ये value 0 हो, 0 ru अधिक केबे हे परिबन. So therefore be no value of x. Answer कोन हो, no value of x for which the function is increasing. The function is increasing. x रे कोन x रे एमटी कोन सी वैल्यू नै जोति पय ये फंक्शन कोन हो, increasing हो. ठीक है. Mention the values of x for which the function this is increasing, since f of x is equal to x cube minus 12x. Now let us find the first derivative, f dash x. Derivative of x cube is 3x square minus 12 into x derivative 1. F dash x is increasing, since f of x is increasing, therefore f dash x is greater than 0, and f dash x is 3x square minus 12 is greater than 0. So x square minus 4 3 रे divide कर देंगे, greater than 0. So this is x plus 2 into x minus 2 factorize is greater than 0. Now the critical values, critical value कौन कौन है, गोटे 2 आ गोटे minus 2. साइंस की मेथड जाना है, बड़ा नंबर सामने रे प्लस और राइट रो लेफ्ट को मूव करी करी चलिए. साइंस की मेथड और वेवी कर्व मेथड, यार दुईटा ना है, साइंस स्कीम और वेवी कर्व मेथड. इंक्रीजिंग पे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 माने 2 आगे और minus 2 पछरे. Therefore x belongs to minus infinity to minus 2 or माने यूनियन 2 to infinity. ठीक है, एटा होची यार आंसर. ए इंटरवल रे जदि x रो वैल्यू रहयो, then the function will be always increasing, and this was came in 2009 and 2012 माने important question. ठीक है. Now let's go to the third question. Find the approximate value of this. F of approximate value function, f of x plus delta x is approximately equal to f of x delta x into f dash x. Okay, this is the function. So this is 16.04. 16.04, the square root can be written as 16 plus 0.04, the square root. So x is equal to 16, delta x is equal to 0.04, f of x is equal to, this is x plus delta x will be x, so this is root of x. f of x मिल गया, x जगह 16 लिख दे तो root 16 will be equal to 4. Now f dash x is equal to 1 by 2 root x. So this is f dash x, x minus 4, f dash x minus 4. So this is 1 by 2 into square root of 4, माने 1 by 2 into 2, which is equal to 1 by 4. Formula लेकर तो apply करूँ, this is equivalent to 16.04 है ना, 16.04 square root. This is equivalent to f of a, that is 4, plus h into h is 0.04, which is your delta x, into f dash 4. F dash 4 will be 1 upon 4. So this is equal to 4 plus 4 cancel करेंगे 0.01. So answer will be 4.01. देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16 माने केते होची 4 होची 16.0.4 माने 16 टू टिके आगे टिके अधिका.
So 4.01. Because this is what is called approximation. MT type की question भी आसे. Using differential, find approximately the difference between the volumes of the two cubes of sides 2 cm and 2.01 cm. तो दुईटा क्यूब अच्छे गोटर साइड 2 cm आ गोटर साइड 2.01. डिफरेंस केते एटा को जदि r कहबे एटा को r1 कहबे द डिफरेंस विल बी 0.01. एति हो डिफरेंस 2.01 माइनस 2 हेगला तो 0.01 हेगला. साइड साइड देछि 2 cm तो x को आमे साइड कंसीडर कर देले आ डेल्टा x होछि चेंज इन साइड, चेंज इन लेंथ ऑफ द साइड. तो 2.01 माइनस 2 आ v डगो आमे वॉल्यूम कंसीडर कर दे. देयरफॉर v कते हिजबो वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज v इज इक्वल टू x क्यूब. हमको कौन पचार छी डिफरेंस इन वॉल्यूम और तो डेल्टा v हो डेल्टा v इक्वल टू dv बाई dx इंटू डेल्टा x. दिस इज द डेफिनेशन. चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू dv बाई dx इंटू डेल्टा x. अब d बाई dx ऑफ v रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो. v रो वैल्यू केते होचे x क्यूब अच्छे इंटू डेल्टा x. तो 3x स्क्वायर हेगला x क्यूब रो डेरिवेटिव और डेल्टा x को हम एज इट इज रख देल. x रो वैल्यू 2 अच्छे 2 स्क्वायर हेगला 4 4 इंटू 3 हेगला 12 12 इंटू दैट 12 इंटू 0.01 और 12 इंटू 0.01 0.12 हेगला. बुझेला कौन कौन कले x को हम कौन कले साइड, v को हम कौन कले वॉल्यूम आउ डेल्टा x को हम कौन 2.01 माइनस 2.01 माइनस 2 तो 0.01 हेगला. तो हमको फाइंड करियर थिले डेल्टा v. डेल्टा v रो फार्मूला लिख देले. डेल्टा v रो फार्मूला कोन होची डेल्टा v रो फार्मूला होची dv बाई dx इनटू डेल्टा x. तो dv बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x बाहर कले डेल्टा v रो मल्टीप्लाई कर देले. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. द सेकंड क्वेश्चन इज राइट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट माने जहां जोठी फंक्शन रो वैल्यू मैक्सिमम होबो और मिनिमम हो. एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू cos x plus sin x when x belongs to 0 to pi by 2. राइट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन. तो लुक गिवन f of x इक्वल टू y और f of x. गिवन f of x is equal to cos x plus sin x. Right? Now f dash x is equal to derivative of cos x which is minus sin x and derivative of sin x will be equal to cos x. For extreme values, for maximum or minimum, for extreme values, extreme value कौन होची? For extreme values f dash x will be equal to 0. अब f dash x रो वैल्यू केते होची? f dash x is अभी कैलकुलेट करथिले हम f dash x is minus sin x plus cos x and this is equal to 0. तो what about cos x? Cos x equal to sin x. cos x से डिवाइड कर दियो तो 1 equal to sin x divided by cos x. तो 1 is equal to sin x upon cos x कहते गला tan x. तो tan x equal to 1. 1 माने tan 45 डिग्री. 45 माने pi by 4 रेडियन. तो x is equal to pi by 4. This is the x coordinate of the point. बुझेला कौन बताइले देखला ना the x coordinate of the extreme points of the function y equal to cos x. This is the x function. फंक्शन कौन दी y equal to cos x plus sin x. यार एक्सट्रीम वैल्यू माने either maximum value or minimum value which lies in 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 भितरे ए फंक्शन रो what is the maximum value or what is the minimum value जोटा हबो सेही थी पई तमर x कोऑर्डिनेट रो वैल्यू केते हो. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो मैक्सिमम और मिनिमम पे कौन हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज 0. तो फंक्शन को हमें cos x plus sin x कंसीडर कर देले तार फर्स्ट डेरिवेटिव बाहर कला अब ताको 0 सहित इक्वेट कर देले. सॉल्व कर x x वाला pi by 4. सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ए फंक्शन रो एक्सट्रीम वैल्यू माने ईदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. लुक व्हाट इज गिवन f of x equal to x plus 1 by x. तो f dash x करंतु. व्हाट इज f dash x? f dash x equal to x रो डेरिवेटिव 1 by x रो डेरिवेटिव minus 1 by x square. For maximum or minimum, for maximum or minimum f dash x will be equal to 0. What is f dash x? 1 minus 1 by x square. This is equal to 0. Simplify करिए x square minus 1 divide by x square equal to 0. x square को right side multiply कर दो. So this will be x square minus 1 equal to 0 into x square equal to 0. तो x square is equal to 1
therefore x is equal to plus or minus 1. X value केता आसिला plus 1 or minus 1. Extreme point of the function. Extreme points माने कोटी maximum और कोटी minimum. So these are the two extreme points. Extreme point माने at what point or what is the value of x at which function is maximum and what is the value of x at which the function is minimum. कोटी function टा maximum हो कोटी function टा minimum. तो x रो दुईटा value आसिला plus 1 and minus 1. जदि आउरी check करिवार अछि करि पारि f double dash x. f double dash x. Double dash रे कोन हो यार डेरिवेटिव करी 1 रो डेरिवेटिव 0 minus 1 by x square रो minus 2 by x cube. Minus minus plus हेगला 2 by x cube. Now double derivative at x equal to 1. 1 रे कले कोन आछो 2 by 1 रो cube. x रो जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर x जगह 1 तो here also x is equal to 1. तो 2 आसिगला 2 माने पॉजिटिव. डबल डेरिवेटिव जदि पॉजिटिव हला फंक्शन इज मिनिमम at x is equal to 1. पॉजिटिव हले मिनिमम हो. जदि नेगेटिव हला जेमति डबल डेरिवेटिव ऑफ -1 कते गेला 2 by -1 रो क्यूब माने 2 डिवाइड बाय -1 रो क्यूब कते गेला -1 2 by -1 equal to -2 माने नेगेटिव. नेगेटिव हले कोन हो मैक्सिमम हो f of x is maximum. Extreme point खाली बचा माने हम 80% ओनली करबा. Only this. The values of x at which the function is either maximum or minimum. Okay, ये क्वेश्चन आपन 2003 रे आस्तले. सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं के आछे पिला. 1 evaluate 3 plus cos x plus tan square x divided by 2x plus sin x plus tan x. न्यूमरेटर जो tan x अछि कोन करे देखो 3 plus cos x tan square x को लेखन x square x minus 1. Tan square x can be written as x square x minus 1 divided by tan square x को कौन लिख देले x square x minus 1. x square x minus 1 divided by 2x plus sin x plus tan x. Now this will become this 3 and this minus 1. 3 और minus 1 की 2 हो गला plus cos x plus x square x divided by 2x plus sin x plus tan x. Now या को t नहीं जीवा डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं यार न्यूमरेटर रे यार डेरिवेटिव देखा जाउछ plus tan x is equal to t. Now your derivative of 2x will be 2, derivative of sin x is cos x and derivative of tan x is x square x into dx equal to dt. So the numerator is dt divided by denominator is t and 1 by t का integration log t, right, plus c. So this is equal to log of mod of t. T is equal to 2x plus sin x plus tan x plus c. This is the answer. Direct भी कर परिबे. ऊपर अछि f dash x तळे थियो f of x. If numerator is f dash x, denominator is f of x, then you can write this as log of f of x plus c. येटा होछि तार फार्मूला. ठीक अछि. ये फार्मूला रे भी अपन डायरेक्ट कर परिबे आपको. सेकंड स्टेप ऑनवर्ड्स. तो एठी हमर सेकंड स्टेप एठी आपन देखा जाउछि यार डेरिवेटिव ये डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर तो log ऑफ डिनोमिनेटर लिख परिबे डायरेक्ट. शॉर्ट क्वेश्चन अछि एते के देखिबे, राइट. आ जो सॉल्व करबे त दिस इज द वे टू सॉल्व. इवैल्यूएट cot x divided by log of tan x. So substitute log of tan x log of sin x को t पुट करिवे. When log of sin x equal to t, differentiate करिवे दोनों साइड. Log of sin x, derivative of log of sin x is 1 upon sin x and sin x का derivative होता है cos x into dx equal to dt. तो cos x upon sin x will become cot x into dx is equal to dt. तो देखो तो numerator कौन थिला? Numerator थिला cot x into dx and that becomes dt. Denominator becomes t. तो 1 by t रो integration होचे log of mod of t plus c. So this is equal to log of mod of t. What is t? Log of sin x. Log of sin x plus c. So this is what the second question is. Came in 2011 examination, right? Now let's move to one more question. Now the next question is dx by cos square x into sin square x.
तो देखो डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और न्यूमरेटर 1 अछि सो द न्यूमरेटर 1 को हमें sin और cos रो फॉर्म रे लिखबा 1 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x नाउ इसको सेपरेट करिया ऊपर फर्स्ट टर्म हे गला cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x into dx plus second one is sin square x divided by cos square x into sin square x cos square x into sin square x into dx. So here cos square x gets cancelled, here sin square x gets cancelled. So this is equal to integration of 1 by sin square x into dx plus integration of 1 by cos square x into dx. So 1 by sin square can be written as cos square x into dx plus 1 by cos square x can be written as sec square x into dx. तो cos square x रो इंटीग्रेशन होचे माइनस cot x and sec square x रो इंटीग्रेशन होचे प्लस tan x. तो माइनस cot x plus tan x plus c. So this is the final answer. Okay, now let's move to the next question. E raised to log of cos square x minus cot square x. So this is equal to integration of e raised to log x will be equal to 1. E raised to log of, this is the question given, cos square x minus cot square x, this into dx. Now e raised to log mane log ro base e achi, so this will become 1 and we will be left with cos square x minus cot square x, cos square x minus cot square x. Why? Because e raised to ln x will be equal to x only. E raised to ln x is only x. So ये x है गला. Cos square minus cot square x is 1 by trigonometry formula. The integration of 1 will be equal to x plus. This is the final answer. Came in 2009 exam. Now come to the next question. सब important question बच्चों. Previous year question नहीं गया. One more question from 2009 examination. Sec x into cos x divided by log of tan x. Now put log of tan x equal to t. So what is the derivative of log of tan x? It is 1 by tan x into derivative of tan x is sec square x into dx equal to dt. So 1 by tan x will be cot x. Cot x can be written as cos x upon sin x. Sec square x can be written as 1 upon cos square x into dx will be equal to dt. Now 1 cos x and 1 cos x will get cancelled. 1 by sin x will be equal to cosec x into 1 by cos x will be equal to sec x into dx is equal to dt. So the numerator becomes dt. Numerator becomes dt and denominator becomes t. dt by t. The integration of dt by t will be equal to log t plus c. So this is equal to log of, what was t? T was log of mod of tan x plus c. So this is the final answer. Okay. एकदम basic सब कल identify कर देले question है गला. Write the primitive. What the primitive is? Remember, primitive is called integration. Primitive is called integration. And the one more name of integration is called antiderivative. Antiderivative is also called integration. So primitive कहियो कि antiderivative कहियो, हाँ? You need to find the integral of this. So what the question says? Question says integration of sin x plus cos x. So you need to integral. आपन को integrate करियो पड़ियो. अब फंक्शन कौन देछि sin x plus cos x. तो sin x रो डेरिवेटिव होछि sin x रो इंटीग्रेशन minus cos x रो डेरिवेटिव हेगला sin x plus c. ये हेगला आपन फाइनल आंसर. Came in 2009 examination. Integration of sin x divided by cos raised to 11x. देखो cos raised to 11x बड़ा पावर अछि cos रो आउसी डिनोमिनेटर अछि तार डेरिवेटिव न्यूमरेटर अछि. सो पुट cos x इक्वल टू t. cos x को t करिवे. cos रो डेरिवेटिव होछि minus sin x into dx equal to dt. न्यूमरेटर अच्छे सिर्फ sin x into dx minus dt. सब्स्टिट्यूट कर दो. sin x dx is minus dt divided by t का पावर 11 minus integration of t power 11 न्यूमरेटर को निकले t power minus 11. Now this is equal to minus of t raised to minus 11 plus 1 डिवाइड बाय माइनस 11 प्लस 1 प्लस c. तो ये होची माइनस 10 अगर माइनस तो माइनस ऑफ माइनस अगला प्लस 10 तो 1 अपॉन 10 इंटू टी रेज टू माइनस 10 प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू 1 by 10 इंटू 1 by t रेज टू 10. अब t होतला cos x.
cos raised to tan x plus c एटा होचुना आंसर एकदम बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन 2008 रास्टल एग्जाम रे वन मोर क्वेश्चन dx डिवाइड बाय 2x minus x स्क्वायर देखो तो ऊपर तो 1 अछि dx माने ऊपर कोन अछि 1 अछि 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक अछि तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनांतो x स्क्वायर रो कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन अछि नेगेटिव को साइन को बाहर को दे दंतो दिस इज x स्क्वायर minus 2x परफेक्ट स्क्वायर करिया पय 1 ऐड करंतो 1 सब्ट्रैक्ट करंतो to make it a perfect square add 1 and subtract 1 now this is integration of 1 divided by square root of minus of x minus 1 the whole square minus 1 ka square this into dx so this is equal to integration of 1 divided by 1 square minus x minus 1 the whole square so this is a square minus x square 1 upon a square minus x square and that is equal to sine inverse of x by a x is equal to x minus 1 divided by 1 plus c. So this also can be written as sine inverse of only x minus 1. Hegla 1 mark question. 2008 again came in 2008. One more question. Find the antiderivative. Antiderivative means integration. Antiderivative and primitive both means integration. Integration of e raised to x into tan x plus log of sec x. So look, this is your integral. I is equal to integration of e raised to x into tan x plus log of sec x, right, into dx. देखो गोटे फॉर्मूला थिला ना, what the formula is e raised to x into f of x plus f dash x. जदि बाहर e raised to x रहियो अब ब्रैकेट भीतर तुम फंक्शन प्लस तार डेरिवेटिव यार फॉर्मूला कोन होची यार फॉर्मूला होची e raised to x into f of x the function plus c this is the formula ए फॉर्मूला को यूज करियो चेष्टा करियो तो प्रथम फंक्शन होची प्रथम जो होची tan x जो f of x कहबे तार डेरिवेटिव sec square x ये तो नाही नाउ आ गोटे अल्टरनेट बचला एंड द अल्टरनेट इज log of sec x को f of x कहबा log of sec x is equal to f of x डिफरेंशिएट करबा f dash x equal to log of sec x रो 1 upon sec x और sec x रो डेरिवेटिव होची sec x into tan x sec x और sec x कैंसिल हो गला तो f dash x मिल गला tan x therefore I is equal to integration e raised to x into f dash x plus f of x into dx तो फॉर्मूला होची e raised to x into f of x ना 8 f of x कोन 8 f of x होची log of sec x plus c so this is the third problem देखो क्वेश्चन कोन अछि evaluate question is evaluate 3 into dx divided by x minus 1 into x plus 2 देखो तो तळे दुईटा जाको लीनियर फंक्शन तळे दुईटा जाको लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर गोटे कांस्टेंट अछि ह तो ए केसेस रे हम कोन करछे इन दिस केस वी विल राइट न्यूमरेटर जो 3 अछि सेटा को हम डिनोमिनेटर फॉर्म रे लिखिबा को चेष्टा करिया डिनोमिनेटर कोन अछि x plus 2 और x minus 1 जदि मु एमते लिखिबी x plus 2 minus of x minus 1 देखो x x कैंसिल हो जो 2 minus of minus 1 plus 1 हो गला तो 2 plus 1 will be 3 तो न्यूमरेटर जो 3 अछि 3 को हम एमते लिख दी पारले x minus 1 into x plus 2 तो 3 को एमते लिख दे अभी सेपरेट कर दे जदि सेपरेट करिवे फर्स्ट इंटीग्रल है जो x plus 2 डिवाइड बाय x minus 1 into x plus 2 दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल माइनस सेकंड इंटीग्रल हबो x minus 1 डिवाइड बाय x minus 1 into x plus 2 तो दिस मेथड इज कॉल्ड राइटिंग द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर जो दो टर्म अछि सेही दी टर्म रो टर्म जोसरे को यूज करके न्यूमरेटर को लिखवा चेष्टा करिवे सो x plus 2 x minus 1 so this is 1 upon x minus 1 will be log of x minus 1 minus 1 upon x plus 2 will be equal to log of x plus 2 plus c so this is log m minus log n equal to log of m by n which is x minus 1 divided by x plus 2 plus c this is the first question came in 2004 exam rastela next what the second question is e raised to x into cos x plus e raised to x into sin x देखो तो दुईटा जगह e raised to x अछि
तो e raised to x into cos x plus e raised to x into sin x एमती लिख पार इंटीग्रल को ऐड करके नाउ e raised to x दुईटा जगह इंटीग्रल रे कॉमन अच्छे सो टेक e raised to x आउटसाइड एंड दिस विल बी cos x plus sin x एटा इंपोर्टेंट टाइप ए टाइप रो क्वेश्चन सब बेले हिट करिवो नाउ कंसीडर दिस एज f of x sin x को जदी फंक्शन करिवे यार डेरिवेटिव हो गला f dash x तो sin x plus cos इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ e raised to x into f dash x plus f of x अब ये टाइप रो आंसर कोन हबो e raised to x जदी बाहर रहला ब्रैकेट भीतर जदी f of x और f dash x रहला आंसर होची e raised to x into f of x plus c so this is equal to e raised to x into what is f of x माने फंक्शन कोन अछि एठी फंक्शन अछि sin x plus c this is the answer again came in 2004 exam ए टाइप रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टाइप रो टाइप्स ऑफ बोल हिट करे तो इवैल्यूएट रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्रथम सिंपलीफाई करूं तो एलसीएम नहीं की या को इधर मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx तो यार रूट ये दोनों कैंसिल हो गला a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर पड़ेला इंटीग्रेशन रो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नाउ व्हाट इज रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c देखो तू छोटे-छोटे ट्रांसफॉर्मेशन कर दे दिस वाज केम इन 2008 छोटे-छोटे ट्रांसफॉर्मेशन कर दे खाली सिंपलीफाई कर देली ऊपर कांस्टेंट होला कांस्टेंट कोन हो इंटीग्रेशन रो बाहर को जंप करके पड़ेला 1 by root of a square minus x square and तार the direct formula আছে sin inverse of x by a if f of x is an odd function so what is an odd function is if f of minus x is equal to minus of f of x then the function is odd and if f of minus x is equal to plus f of x then it is even function so this is what odd and even function is then write the value of minus a to a f of sin x this तो देखो गोटे प्रॉपर्टी अच्छे हमारा माइनस a to a f of x into dx is equal to 0 if f of x is an odd function if f of x is odd how जदि f of x even हबो then this is 2 times 0 to a f of x into dx if it is even तो ये प्रॉपर्टी को यूज करबा को चेष्टा करियो नाउ सेहिति पय ये जो गिवन फंक्शन अछि या को चेक करियो पड़ियो whether this is odd or even तो फंक्शन को कंसीडर करते हैं तो let g of x is equal to f of sin x divided by f of cos x plus f of sin square x this is the given function now find the value of g of minus x to check whether it is odd or even so f of sin of minus x divided by f of cos of minus x plus f of sin square of minus x right so this is f of sin of minus x is minus sin x sin of minus x is minus sin x and f of minus x is cos x and f of sin square of minus x is sin square x since f of x is odd f of minus sin x will be minus of f of sin x divided by f of cos x plus f of sin square of x right now this is your g of x eta ko hame g of x consider करते so this is equal to minus of g of x now what you got is कौन मिला आपन देखंतु g of minus x equal to minus of g of x therefore g of x is an odd function g of x is an odd function अगर g of x odd function हो then the integration of g of x will be equal to 0 correct easy question थिला खाली ए प्रॉपर्टी यूज करिवे दुईटा प्रॉपर्टी यूज कला गोटे एटा जो odd function हो तो f of minus x कोन हो minus of f of x even function है f of x minus x equal to f of x तो function जो odd हो गला आंसर 0 हो गला function even है 2 times हो तो यहाँ पे function 80 function कोन थिला odd function therefore answer will be 0 came in which year 2019 recent lockdown पूर्व question now look greatest integer function ये गोटे important function stands for greatest integer function GIF stands for greatest integer function
Now what greatest integer function is? Greatest integer function which a function जो integer रे defined हो at an integer only. तो 0 to 1 greatest integer, 0 to 1 भितर greatest integer value सब बोले 0. Between 0 to 1 the value of greatest integer is always equal to 0. तो एटा इगला integration 0 to 1 greatest integer will be 0 into dx, answer is 0. Greatest integer function graph जानते. So this is x axis, this is y axis, this is 0 and this is 1. 0 to 1 with अपन कोई भी value नहीं होती. More than 0 and less than 1 including 0 ना, answer सब बोले 0 आशो. ग्राफ टा 80 रहेगा. 1 to 2 भीतर ग्राफ कोठी होगा 80 होगा. 2 to 3 भीतर ग्राफ कोठी होगा 80 होगा. एम्प्टी. तो 0 to 1 भीतर कोई भी वैल्यू नहीं होता. The greatest integer will give you 0. तो ये फंक्शन रो वैल्यू 0 होगा तो इंटीग्रेशन will be always equal to 0. So that is your answer. Okay, now let's move to one more question that was came in 2007 or 17 I think. So 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x into dx minus 0 to pi by 2 cos x by this. देखो तो दुईटा जगह लिमिट सेम अच्छे तो दुईटा जगह लिमिट सेम अच्छे आमे इंटीग्रल को ऐड करि परिबा या माइनस करि परिबा. डिनोमिनेटर सेम अच्छे तो इन बिटवीन साइन नेगेटिव अच्छे तो sin x minus cos x हेगला डिवाइड बाय sin x plus cos x. sin x plus cos x into dx. So this is the function. Denominator को t put करिए. Put sin x plus cos x equal to t. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x into dx equal to dt. Cos x minus sin x is dt. तो माइनस रे मल्टीप्लाई कर दियो तो sin x minus cos x कहीं ना न्यूमरेटर sin x minus cos x अच्छे ना sin x minus cos x is minus dt. लिमिट चेंज करन तो when x is equal to 0 sin 0 will be 0 and cos 0 will be 1. जते बेले सब्स्टिट्यूट करिवे डेफिनेट इंटीग्रेशन रो लिमिट को चेंज करिवे sin 0 0 cos 0 1 तो t is equal to 0 plus 1 will be 1 and when x is equal to pi by 2 sin pi by 2 is 1 and sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0. t is again equal to 1. So therefore integration of 0 बेले 1 है pi by 2 में भी 1 है ऊपर है माइनस dt तले है dt. को इंटीग्रल रो लोअर लिमिट अपर लिमिट दुईटा जगह सेम है आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. कहीं ना इंटीग्रेशन हैला परे अपर लिमिट पुट करिए माइनस लोअर लिमिट पुट करिए अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट रो वैल्यू जति की लोअर लिमिट रो वैल्यू सेति की सबट्रैक्ट है आंसर इज 0. Right, came in 2016. So these are all 1 mark questions. Integration 1 to 2 f of x dx is lambda. This is given. Given integration of 1 to 2 f of x into dx is equal to lambda. This is given. Now you need to find the value of integration 1 to 2 f of 3 minus x into dx. Property use कर दियो तो this is equal to integration 1 to 2 f of x जगह कहते लिखिए 2 plus 1 minus x into dx. And that will be same as lambda. So this is equal to integration 1 to 2 f of 3 minus x into dx and that is also equal to lambda. को property use कर ले. Property is integration a to b f of x into dx will be same as integration a to b f of a plus b minus x into dx. तो 81 थिला 82 थिला तो एटी कौन है 1 plus 2 minus x है 1 plus 2 minus x that is 3 minus x. यदि 1 to 2 रे वैल्यू लैम्डा होची then 1 to 3 रे 3 minus x also have the value lambda. 1 to 3 रे जदि फंक्शन रो इंटीग्रल रो वैल्यू कौन होची लैम्डा हैला ना 3 minus x जदि हबो then also 1 to 2 रे तार वैल्यू लैम्डा ही हो. करेक्ट. Now come to the next question. The next question is integration 0 to 7 x divided by 3 and this is a greatest integer function. Greatest integer function कौन होची इंटीजर डिफाइंड हो ए जो भीतर जो वैल्यूटा अछि ये केते बेले इंटीजर हो जेतेले x रो वैल्यू 3 होबो 6 होबो 0 to 7 भीतर केते टाइम इंटीजर हो जेतेले x 3 होबो तो 3/3 1 होबो जेतेले x 6 होबो then 6/3 2 होबो. Right, so this x/3 the greatest integer of x/3 0 less than x less than equal to 3. Similarly 3 less than x less than equal to 6.
0 less than equal to 3 less than equal to, here only less than 3 to 6 भितर से कौन हो 2 हो, so this value becomes 1, and from 6 to less than 7 80%. So this is x upon 3. This is the greatest integer. When you put x is equal to 0 till 3, this value will be equal to 0. When you put x equal to 3 to 6, this value will be equal to 1. 3 to 6, the value 1, and from 6 to 7, this value will become 2. कहीं 6 रे कौन हो ये 2 हो, और 6 to 7 भीतर ये सब बोले 2 रहे, 2 point something हम, अब 81 point something हम, 1 point something माने इंटीजर वैल्यू कहते हैं 1, 80 point something हम माने इंटीजर वैल्यू कहते हैं 0. सो या को हमें स्प्लिट कर दवा. सो दिस इज फ्रॉम 0 to 3 प्लस दिस इज फ्रॉम 3 to 6 and the next is from 6 to 7. ग्रेटेस्ट इंटीजर सबुठ इंपोर्टेंट कथा एटा जो फंक्शन देइतो ताको हमें केमते लिमिट रे स्प्लिट करबा. So from 0 to 3, x upon 3 will be equal to 0, and from 3 to 6 this will become 1, and from 6 to 7 this will become 2 into dx. So first integral value is 0, second integral x, and this is from 3 to 6, third integral 2 into x, and this is from 6 to 7. So this is 0 plus x को 6 minus 3 लिखो, upper limit minus lower limit, 2 into 7 minus 6. So 6 minus 3 will be 3, 7 minus 6 is 1, 1 into 2 will be 2, and 3 plus 2 will be equal to 5. This is your answer. 2007-2009 duty jag year astila. ठीक है, greatest integer of x by 3. Now, if f of third question 2008 came in 2008. If f of x is an even function, what is an even function? Even function is f of minus x will be equal to f of x. And if it is an odd function, f of minus x will be equal to minus of f of x. If f of x is an even function and minus 2 to 0 f of x equal to 3 by 2, then what is the value of, so look, you need to find the value of this f of x into dx. Even function of property kaun hochi, this is equal to 2 times 0 to 2 f of x into dx. And 2 times 0 to 2 is same as minus 2 to 0, since it is an even function. This is f of x into dx, and this is given as 3 by 2. Integration minus 2 to 0 f of t into dt will be equal to, so 2 times minus 2 to 0 f of x can also be written as f of t dt. Why? Because when you keep the limit same, जतों आपण लिमिट को सेम रखिबे, वेरिएबल को चेंज कला परे भी आपनकर इंटीग्रल रो वैल्यू सेम रहयो. So 2 into this is given as 3 by 2. So 2 and 2 will get cancelled and the answer is 3. This was came in 2008, जो कि 2008 रे आस्तले, right? So this is integration minus pi by 4 to plus pi by 4 x cube sin x. दिमाग रे ट्यूब लाइट अछि हमर, जेतेबेले एम्प्टी टाइप रो लिमिट देखिबे minus a to plus a और minus pi by 2 to plus pi by 2, ये वाला प्रॉपर्टी आपन को मन पड़ियो. This is the property, minus a to a dx equal to 0 or 2 times 0 to a f of x dx. 0 होगा जेतेबेले फंक्शन हो odd, 2 times 0 to f of x dx when the function is even. Now to check odd and even function, consider f of x equal to the given function. Given function कौन अछि? x cube plus sin x. Now put x is equal to minus x. So this is equal to minus x का cube plus sin of minus x. Minus x का cube कितना हिला? Minus x cube, and sin of minus x is minus sin x. So minus sign बाहर ऊपर. This will be x cube plus sin x, right? So this is equal to minus of f of x. So f of minus x equal to minus f of x, that is f of x is an odd function. F of x is an odd function. जदि odd function होबो, property कौन कहूची, यार answer होबो 0. The answer of this question will be equal to 0, which was came in 2008. तो जेतेबेले आपन को minus a to a function दुसला, minus a to a function सबुले गोटे थर चेष्टा करिए देखिया को जो फंक्शन गिवन अछि से फंक्शन ऑड फंक्शन की, अगर ऑड फंक्शन रहयो तार आंसर 0 हो जो, इवन फंक्शन ले 2 times 0 to a हो तापर इंटीग्रेट कर दे पारी, राइट? सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. 0 to 2 3 minus 2x into dx. 3 minus 2x into dx. देखो 3 minus 2x रो वैल्यू
केतेबेले 0 होबो दिस विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 3/2 x रो वैल्यू जेतेबेले 3/2 होबो सेतेबेले ये 0 होइजो 3/2 ପରେ କଣ ହବ ଆଉ 3/2 ପୂର୍ବରୁ କଣ ହବ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି why because mod x will be equal to x when x is greater than or equal to 0 and will be minus x when x is less than 0 right now ये जो 3 minus 2x अछि एटा नॉर्मली केमती हेबा दरकार 2x minus 3 हेबा दरकार जदि 2x minus 3 हेतांता तो आमे एठी 0 बाहर कर दिथांते 0 केतेबेले होछि 3/2 रो ता पूर्वरो नेगेटिव हेतांता ता परे प्लस एठी पॉजिटिव एठी नेगेटिव हेतांता 3/2 पूर्वरो नेगेटिव हेतांता आ 3/2 परे पॉजिटिव हेतांता किंतु एठी उल्टा फंक्शन दिया है कोन दिया है 3 minus 2x तो बी केयरफुल जदि वेरिएबल टा परे अछि कांस्टेंट टा पूर्वरो अछि तो टिके सतर्क रहिबे कोन करिवे एटा को 0 to 3/2 दुईटा इंटीग्रल रे आपको कन्वर्ट करिवे प्रथम इंटीग्रल हे गेला आपनकर 0 to 3/2 माने that value of x where the function becomes 0 3/2 plus 3/2 ru 2 नॉर्मली कोन हुए 3/2 रे 0 हैला माने 3/2 पूर्वरु नेगेटिव हुए 3/2 परे पॉजिटिव हुए एबे कोन करबा हमें 3/2 पूर्वरु काइना यार उल्टा फंक्शन अछि ना 2x minus 3 नहीं कोन अछि 3 minus 2x तो जस्ट उल्टा हे जो जोठी नेगेटिव होतला सेठी पॉजिटिव हे जो और जोठी पॉजिटिव होतला सेठी नेगेटिव हे जो किंतु अपन केमती ट्राई करिवे देखो 0 to 3/2 भितरे गोटे छोटिया वैल्यू नहीं ट्राई करिवे टेक ए स्मॉल वैल्यू सो 0 to 3/2 भितर हमर गोटे वैल्यू हे गेला 1 8 पुट करंतु देखो कोन होछि जेतले 1 पुट करिवे तो इंटीग्रेशन बिकम्स 3 minus 2 कोन हे गेला 1 हे गेला माने पॉजिटिव होछि आ 2 जेतले पुट करिवे 3/2 to 2 भितर गोटे वैल्यू 2 नियंतु जेतले 2 पुट करछन 3 minus 4 will be equal to -1 तो 0 to 3/2 भितर ए जिंसटा पॉजिटिव होछि नॉर्मली कोन हेबा कथा नेगेटिव हेबा कथा काइना फंक्शन उल्टा अछि तो एठी कोन होछि जदि 3 minus 2x रहइबो 2x minus 3 थिले 3/2 रे 0 होछि तो 3/2 पूर्वरु पॉजिटिव नेगेटिव होबो 3/2 परे पॉजिटिव होबो जदि 3 minus 2x रहिला जस्ट उल्टा हे जो जोठी नेगेटिव होतला सेठी पॉजिटिव जोठी पॉजिटिव होतला सेठी नेगेटिव तो 0 to 3/2 रे पॉजिटिव होबो दैट इज 3 minus 2x and 3/2 ru 2 रे एटा नेगेटिव पार्ट ता so this will be minus of 3 minus 2x यही स्टेप ता होची इंपोर्टेंट स्टेप या पर नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ना 3 into 1 रो इंटीग्रेशन हेगला x minus 2 into x रो इंटीग्रेशन होची x square upon 2 and this is from 0 to 3/2 this is from 0 to 3/2 then plus minus 3 हेगला माइनस बाहर अछि माइनस भितरु नै जो -3 into 1 रो इंटीग्रेशन हेगला x minus minus हेगला plus 2 into x रो इंटीग्रेशन हेगला x square upon 2 and within the limit 3/2 to 2 now value put करंतु 3 into ये 2 तो कैंसिल कर दो ये 2 को 80 कैंसिल कर दो x जगह 3/2 सब्स्टिट्यूट करियो 3 into 3/2 minus 3/2 रो स्क्वायर which is equal to 9/4 अपर लिमिट हेगला माइनस जेतेबेले x को 0 करिवे 0 minus 0 then plus x को 2 लिखिबे minus 3 into 2 plus 2 square will be equal to 4 this is your upper limit minus 3 into 3/2 plus 3/2 रो स्क्वायर which is equal to 9/4 so this is equal to 9/2 minus 9/4 एटा तो 0 हेगला लिखबा दरकार नै this is minus 6 plus 4 which is minus 2 and minus of minus will be plus 9/2 minus of minus will be minus 9/4 correct 9/2 minus 9/4 9/2 minus 9/4 is equal to 9/4 9/2 minus 9/4 is also equal to 9/4 check कर देखो एलसीएम 4 कर देबे so 2 रे मल्टीप्लाई हे जो 18 minus 9 will be 9 divided by 4 8 be 9/4 minus 2 9/4 plus 9/4 will be 18/4 18/4 minus 2 18/4 माने 9/2 9/2 minus 2 so 9 minus 4 will be 5/2 and this is your answer this is came in 2007 एक मार्कर क्वेश्चन अछि किंतु एतर बहुत सिखवा जिंस अछि देखो जदि x minus 1 रहला मोड भितरे वेरिएबल आगे अछि तो जदि इंटीग्रेशन 0 to 2 देला कोन देला 0 to 2 1 रे 0 होछि तो जतले x को 1 करिवे फंक्शन रो वैल्यू 0 होछि ना तो 1 to 2 0 to 1 हेगला 1 to 2 हेगला 0 to 1 भितरे कोन हबो नेगेटिव आ 1 to 2 भितरे पॉजिटिव जदि एटा 1 minus x हेगला जस्ट उल्टा जोटी नेगेटिव होतला सेठी पॉजिटिव जोटी पॉजिटिव होतला सेठी नेगेटिव राइट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन -1 to +1 mod x plus x the whole square now
सेम कंसेप्ट रे जिबा -1 रु 0 काहे ना ये जो mod x टा 0 पर पॉजिटिव होची 0 पूर्व नेगेटिव होची तो -1 रु 0 प्लस 0 रु 1 जेतले -1 रु 0 रखियो mod x will become -x and this is plus x the whole square 0 to 1 with mod x will become x plus x the whole square this into dx and this into dx so minus x plus x cancel ho gala 0 -1 to 0 0 into dx so this will become 0 x plus x will become 2x 2x ra square ho gala 4x square 0 to 1 4x square into dx so this value is equal to 0 4 constant baharu bahar kar x square ro integration x cube by 3 and from the limit 0 to 1 so this is equal to 4 into 1 by 3 minus x को 0 लिख ले तो 4 into 1 by 3 and this will be equal to 4 by 3 and here is your answer correct so this was came in 2005 exam आस्थिला 1 mark correct 1 mark रो question next one more question कोन देछि integration 1 to 3 tan inverse x plus 1 to 3 cot inverse दुटा जगह लिमिट सेम अछि so the limit सेम अछि हम फंक्शन को ऐड कर दी परिया so this will be equal to tan inverse x plus cot inverse x into dx now what is the formula of tan inverse x plus cot inverse x tan inverse x plus cot inverse x is nothing but equal to pi by 2 tan inverse x plus cot inverse x रो formula कोन होछि pi by 2 होछि so pi by 2 हो गेला pi by 2 अपन कांस्टेंट बाहर कर देन तो 1 into dx and within the limit 1 to 3 now so this is equal to pi by 2 integration of 1 will be equal to x and within the limit 1 to 3 so this is pi by 2 into x is 3 minus 1 3 minus 1 will be 2 so pi by 2 into 2 and 2 will get cancelled and the answer equal to pi so this is your final answer correct now next question को जिबा कोन दे देखो if integration 0 to 1 f of t dt equal to 2 0 to 1 f of t dt is 2 and 1 to 2 f of u du equal to -1 now कोन find करिवार अछि integration 0 to 2 therefore what you need to find is integration 0 to 2 f of x into dx now 0 to 2 can be written as 0 to 1 plus integration 1 to 2 f of x into dx now look 0 to 1 रे f of t reach तो गोटे प्रॉपर्टी अछि ना हमर फर्स्ट प्रॉपर्टी जदि हम लिमिट को सेम रखिबे इंटीग्रल भितरे तार वेरिएबल को चेंज करि परिबे कैन चेंज द वेरिएबल दैट इज instead of x you can write t also and plus integration 1 to 2 you can write u also so from integration 0 to 1 f of 2 dt this value is equal to 2 that is given in the question plus 1 to 2 is given as -1 so this is -1 so this is equal to 2 minus of 1 equal to 1 and this is your answer so this was came in 2000 बहुत इजी क्वेश्चन अछि किंतु 1 मार्क के लिए जथेष्ट अछि राइट now next move to next question integration minus pi by 2 to plus pi by 6 sin cube x into dx so I already told you ମୁଁ आपन आगुरु कहि जेते बेले एम्ति टाइप रो लिमिट देखिबे minus a to plus a minus pi by 2 to plus pi by 2 minus pi by 6 रो plus pi by 6 सब बेले भाबिए फंक्शन ऑड फंक्शन तो नहीं जदि फंक्शन ऑड फंक्शन अछि तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जो इवन फंक्शन थिले 2 times 0 to pi by 6 हो जो so let us check whether the given function is odd or even let us consider f of x equal to sin cube of x now how do you check केमते चेक करबे x रो जगह minus x सब्स्टिट्यूट कर दे sin cube of minus x what is sin of minus x equal to minus sin x and the cube of that so this is equal to minus of sin cube x equal to minus of f of x so since f of minus x equal to minus of f of x is an odd function f of x is an odd function jodi odd function hobo therefore minus a to a which is minus pi by 6 to pi by 6 an odd function will be always is equal to 0 this odd function will be equal to 0 so this is your answer find by integration the area bounded by the straight line y equal to 0 but the straight lines y is equal to 0 y equal to 0 माने x axis y equal to x माने line passing through origin आ गोटे लाइन अछि x plus 2y equal to 3 आ गोटे लाइन अछि x plus 2y equal to 3 ए लाइन टा को ड्रा करबा कछ सो देखो आगे हमें कोन करबा x और y axis ड्रा करबा so this is your x and y axis now what are the lines given first line is your y equal to 0 y equal to 0 माने x axis y equal to 0 माने x axis तो x axis है गला आपनकर y equal to 0 this is x axis x and x dash and here is your y and y dash
The line y equal to x. The line y equal to x. This is the line which is passing through origin. The y equal to x वाला line ना सब बोले origin to pass करे, right? So this is the line y equal to x. बन गया? So this is the line y equal to x. Now the third line, x plus 2y equal to 3. X plus 2y equal to 3. So given line is given y is equal to 0. ये क्या को represent करछी? X axis. Y is equal to x. Line through origin. Line through origin. And x plus 2y equal to 3. ये लाइन टा बनेबा बे एटलीस्ट दुईटा पॉइंट दरकार. गोटे एक्स एक्सिस ऊपर नेबा आ गोटे वाई एक्सिस ऊपर. जोटा एक्स एक्सिस ऊपर थिबो सेतिर वाई कोऑर्डिनेट कोन होबो 0. लाइन जोटी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करियो तार वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई को 0 कल एक्स हे गला 3 एंड सिमिलरली जतल एक्स को 0 करिवे वाई हे गला 3/2. So let this will be your 3, 0 and this is 0, 3/2, 0, 1.5. Now let's draw the line joining these two points. तो गोटे लाइन जॉइन कर दे जोटा ए दुईटा पॉइंट को जॉइन करके चलला. ठीक है, दिस इज द लाइन. एबे देखो तो को एरिया कथा होची एरिया रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड एरिया कोटा दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. ये दुईटा लाइन सहित बाउंडेड. तो ए पॉइंट हमको दरकार. ए पॉइंट केनते आनिया प्रथम देखिए ए लाइन तो तळर एरिया एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन देन बाय बाउंडेड बाय दिस लाइन. और ये लाइन रो इक्वेशन होची y इक्वल टू x. ये लाइन रो इक्वेशन होची x plus 2y is equal to 3. दुईटी जगह लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो. सो लेट कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. y को x कर दो. तो सॉल्विंग 1 एंड 2 टू गेट द लिमिट. सॉल्विंग 1 एंड 2 दुईटा जगह सॉल्व कर दे हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जियो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केनते बोले y को x सब्स्टिट्यूट कर दियो देठी. सो दिस इज x plus 2 into x is equal to 3. So 3x equal to 3, so x is equal to 1. Y equal to x, so y is also equal to 1 and the point is 1, 1. So area is equal to integration 0 to 1. Now 80 x value कौन है? ये 3, 0 थिला ना. This point was 3, 0. So this is 0 to 1 plus 1 to 3. 0 to 1 plus 1 to 3. Now 0 to 1 रे फंक्शन रो जो एरिया आसो एरिया रो फॉर्मूला कोन होची एरिया बाउंडेड बाय द कर्व व्हेन द एरिया इज अबव एक्स एक्सिस इज y dx y into dx mod y हां प्लस 1 रो 3 80 y कहता है वो ये लाइन इक्वेशन ना x plus 2y equal to 3. तो 80 हे जीवो 3 minus x that is 2y divided by 2 which is y into dx. now y रो वैल्यू कोन होची x अछि 0 to 1 into dx plus 81/2 बाहर ने जबा integration 1 to 3 minus x into dx. Correct. So x रो integration ही जाउची x square by 2 and within the limit 0 to 1 plus 1/2 3 into 1 रो integration x रो integration x square by 2 and this is from 1 to 3. तो x को 1 करिवे 1/2 minus 0 plus 1/2 into x को 3 करिवे 3 into 3 will be 9 x square will be 9/2 minus x को 1 करिवे 3 minus 1/2. So this is equal to 1/2 plus 1/2 into 9 minus 9/2 will be 9/2. 3 minus 1/2 will be 5/2. So 9/2 minus 5/2 will be 4/2. 4/2 equal to 2. So half plus 1/2 into 4/2 equal to 2. 2 gets cancelled. Half plus 1 will be 3/2. And since this is your area, so units represented by स्क्वायर यूनिट्स कौन कले बुझला सब लाइन को ड्रॉ कर देली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काट देली दुईटा एरिया कन्वर्ट कर देली. करेक्ट बुझियला. फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बाय द कर्व y square equal to x. this is a parabola x equal to 0 and y equal to 1 and this was came in 2010 and it's a textbook question. now y square equal to एथरे डायग्राम बनेबा पड़ियो सब बेले y square equal to x. this is a parabola. And how the parabola will look like? Your axis also x axis. This is how the parabola will look like. This is y square equal to 4ax or y square equal to x. X is equal to 0, that is y axis. Y equal to 1. Y equal to line 1 will be a line which is parallel to x axis. This is the line. This is the equation of the line y is equal to 1.
and this is x axis, matlab y equal to 0. So this is the area required. area आपन दरकार. So area is equal to formula कोन अछि y axis रे bounded अछि. जदि y axis रे bounded रो mod x into dy. Limit is go from this to this. 80 y रो value 0. This is y equal to 0, and from there 80 y रो value 1, 80 y रो value 0. So this is equal to 0 to 1. Mod x हेगला x. Mod x हेगला x. Y square equal to x ना. Mod x माने जदि y square is equal to x अच्छी, y square equal to x अच्छी, x will be equal to y square. तो एठी जो x अच्छी, x माने function of y square. y को integrate करिवा हमें. So instead of x, write y square, right? Y square, and integration into dy within the limit 0 to 1. Now y square integration होचे y cube divided by 3, and from the limit 0 to 1. So 1 by 3 constant, y cube 1 cube minus y cube is 0 cube. So 1 cube is 1, 1 into 1 by 3 will be 1 by 3, and area since represented in square units. This is not mod x, huh? This is x which is in the form of y, and since area जदि negative आसिला हम तब कौन करिया, absolute value positive consider करिया, that's why the mod will be written. Now question number 3. Find the area of the trapezium. Find the area of the trapezium bounded by y equal to x. This is a line parallel to, this is a line passing through origin. Y x equal to 0, that is y axis. Y equal to 3, parallel to x axis, and y equal to 4. Let's draw the diagram first. आगे diagram बन दवा. So this is your y axis and this is your x axis. Now let's draw the line which is passing through origin, and that is y equal to x. So y equal to x will be a line which will pass through origin. This is the line y equal to x. X equal to 0, that is y axis. X equal to 0 will be equal to y axis. Y equal to 3 and y equal to 4. What is y equal to 3? Y equal to 3 will be a line which is parallel to x axis. Let this will be y equal to 3. This is y equal to 3. One more line, y equal to 4. One more line, y equal to 4. So which area is required? Look, this line is your y equal to x. This line equal to y equal to, this is the line y equal to x. This is your y equal to 4. This is your y equal to 3. And this is your x equal to 0. So this area is required. This trapezium is required, which is bounded by this line, bounded by the line y equal to x. ये line is bounded. So this is the area required. यही area आपको दरकार. तो limit क्या था 0 to. So area is equal to integration. Limit is from 3 to 4. Limit कौन निकला 3 to 4, and y dx के बदले x dy, x into dy. Why? Yx, because the area is bounded by x axis. यदि y axis रे bounded है x dy, x axis रे bounded है y dx. Now what is y? Y equal to x, or x is equal to y. So this is equal to integration 3 to 4. X is equal to y into dy. Now what is y? Y रो integration होची y square by 2 within the limit 3 to 4. Now 1 by 2 constant. 4 square will be 16. 3 square will be 9. 16 minus 9 will be 7 upon 2 square units. This is the area, right? This is again an important question. What is the area bounded by x is equal to e raised to y? Look, कौन अच्छी given curve अच्छी x is equal to e raised to y, or y is equal to log x. This is the same thing. X equal to e raised to y, or y equal to log x. And x is equal to 0, y is equal, x equal to 0 माने y axis, y equal to 0 माने x axis, and y equal to 1, y equal to 1 माने line parallel to x axis. So try to draw the diagram. So this is x or y axis. Log x, y equal to log x. तो ग्राफ कैसे रहेगा? y equal to log x या x is equal to e raised to y. X equal to e raised to y माने the graph will be like this, and this is the point 1, 0. This is the point 1, 0. So this is x equal to 0. X equal to 0 माने y axis. Y equal to 0 माने x axis, and y equal to 1. Y equal to 1 माने line parallel to x axis at a distance of 1 unit from the origin. So what is the area required? Y equal to 0 माने eta, x axis. Y equal to 1 माने eta. So this is the required area.
जो पिंक रे मु मार्क करछ ना सो ए एरिया टा मु दरकार दिस इज y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस माने y इक्वल टू 0 this is y equal to 1 line parallel to x axis at a distance of 1 now the area is bounded by y axis so area is equal to integration 0 to 1 x dy y axis को bounded है x dy so this is equal to integration 0 to 1 what is x x is equal to given as e raised to y so e raised to y into dy now the integration of y e raised to y is e raised to y within the limit 0 to 1 so this is equal to e raised to 1 minus e raised to 0 e raised to 1 is e raised to 0 is 1 so answer is a minus 1 square units area h by square units कर दिया so this is the first question of today's video and that was came in 2004 exam right बहुत इजी अछि खाली आपन ग्राफ टा आइडेंटिफाई करियार अछि x is equal to e raised to x माने x equal to e raised to y माने ग्राफ केमति हो और you can identify like this y equal to log x y equal to log x ର ग्राफ जाना अछि तापर डायग्राम बनि गेला एरिया पळे आसीबो राइट now second write the area bounded by y equal to minus 2x y equal to mx form रे अछि किंतु minus 2 अछि माने x जेतेबेले पॉजिटिव हबो y सेतेबेले नेगेटिव आ x नेगेटिव हेले y पॉजिटिव ऑपोजिट साइन जदि x नेगेटिव रे y पॉजिटिव और y पॉजिटिव रे x नेगेटिव लाइन विल पास थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट काई ना सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव आ फोर्थ क्वाड्रेंट रे x पॉजिटिव y नेगेटिव फर्स्ट और थर्ड जदि कहबे फर्स्ट रे बोथ पॉजिटिव third are both negative same thing y equal to minus 2x this is given as y equal to minus 2x x को positive nale y negative y को positive nale x negative so let us draw x and y axis first so this is your x and y axis okay so this is what the graph is y equal to minus 2x y equal to minus 2x will be a line which will pass through origin and will lie in which quadrant second and fourth quadrant line which quadrant second and fourth quadrant why because their signs are different x and y are always of opposite sign right so this is the line y equal to minus 2x y is equal to 0 माने x axis x equal to 1 and x is equal to 3 तो x equal to 1 माने y axis को parallel x equal to 1 माने y axis को parallel so a line will be like this is your x is equal to 1 and one more line pick one to draw कर दो right one more line okay empty अछि a line टा टिक extend कर दो हां so this is the area required so what is the area required area bounded by y equal to minus 2x y equal to 0 माने x axis x is equal to 1 y equal to 1 so this is the area required and since the area lies below x axis negative sign आसीबो सेति so required area is equal to कम करे mod भीतर रख दे integration 1 to 3 y dx y is minus 2x mod into dx so minus 2 is your constant so minus 2 taken outside x ro integration x square upon 2 and within 1 to 3 mod value of this so this is minus 2 by 2 so 2 and 2 will get cancelled so this 2 is not required now only a minus sign but mod ro bahar ko ase plus hai jo 3 square minus 1 square x is 3 na so this is 3 square minus x is 1 so 1 square minus of this and mod of this so this is equal to minus of 3 square 9 1 square 1 so 9 minus 1 is 8 and mod of 8 will be equal to 8 and 8 square units is your answer right and this was came in 2003 बहुत इजी क्वेश्चन किसी ने खाली स्ट्रेट लाइन बनी गला आंसर आसी गला now find the area of the region bounded by y square equal to 8x and the line x is equal to 2 so given parabola is given y square equal to 8x this is a parabola and rightward facing parabola ये parabola जो face हबो ये face हबो parabola rightward एमती हबो parabola रो face this is y square equal to 4ax or y square equal to 8x so this is the parabola right and area and the line x is equal to 2 so what x is equal to 2 x equal to 2 is a line parallel to y axis at a distance of 2 units from origin so this is the area required so first we will find this area एतिक area में बाहर करिया प्रथम जे x axis को bounded अछि ताको 2 रे multiply कर दो so therefore required area is
A is equal to in 2 times kind को ना 8 जैसी area आची 8 symmetric area आची so 2 times integration 0 to 2 x is equal to 2 so equation of this line is x equal to 2 so the area is ranging from 0 to 2 y dx y को modern नहीं कहीं ना area आची so this is 2 integration 0 to 2 y square equal to 8x so y equal to square root of 8x so this is equal to 2 root 2 into root x so this is 2 root 2 into root x into dx so 2 root 2 बाहर बने इसमें 2 into 2 root 2 will be equal to 4 root 2 root x रो integration x का power half माने half plus 1 will be 3 by 2 and this is 2 by 3 and within the limit 0 to 2 now 4 into 2 8 root 2 divided by 3 into x को 2 लिखे 2 power 3 by 2 minus 0 2 power 3 by 2 this is 8 root 2 by 3 2 power 3 by 2 is 2 root 2 so 16 to the 32 divided by 3 and square units this is your answer बुझिया सिंपल क्वेश्चन था खाली पैराबोला बना देले लिमिट पुट कर देले और इंटीग्रेट कर देले अपन write the order of the differential equation whose solution is given by y is equal to look the solution कौन देचे solution y is equal to c1 put a constant plus c2 one more constant into cos of x plus c3 plus c4 into e power x plus c5 c1 c2 c3 c4 and c5 are arbitrary constant order of the differential equation order दरगा order केमती मिलियो जेती के arbitrary constant थियो सेती order मिलियो order of the differential equation always depends on the number of arbitrary constant किंतु एडी arbitrary constant तो एपटे सेपटे ही अछि याको arrange करिया write c1 plus c2 c1 गोटे constant c2 गोटे constant तो तार sum आ गोटे constant let it be k1 into cos of x plus c3 8 c3 को constant कहिबेनी why because c3 is an angle x plus c3 is an angle it's not an arbitrary constant plus c4 into e raised to x plus c5 can be written as e raised to x into e raised to c5 now this c4 into e raised to c5 this is one more constant so this is k1 into cos of x plus c3 plus e raised to x into c4 into e raised to c5 c4 into e raised to c5 now write this as one more constant as k2 so this is equal to k1 into cos of x plus c3 plus e raised to x into k2 so how many constants are there two arbitrary constants are there therefore order of the differential equation is 2 order of the differential equation is 2 so this was came in 2019 recent exam रे आस्थिला 2 वर्ष पूर्व right next I would question करिवा 2008 what are the question says if p and q कौन कोच question देखो if p and q are respectively degree and order देखो आगो डिग्री देछि परे ऑर्डर देछि be careful of the differential equation y is equal to e raised to dy by dx then write the relation between p and q so first make it a differential equation केमते differential equation बनावे given y is equal to e raised to dy by dx take log on both sides log ने dy by dx आगो जंप करके पढ़ाइसो log नहीं जे so this will be equal to log y taking log on both sides log y is equal to dy by dx into log a and since log a is equal to 1 you will get dy by dx minus log y is equal to 0 this is the differential equation now ये first order अच्छी और यार power भी 1 अच्छी तो order equal to 1 and degree is equal to 1 order and degree both are 1 and 1 respectively now what is order and what is degree is p so degree is p and order is q so p and q both are 1 and 1 respectively so this is your answer okay now move to the next question the next question is the order of the differential equation of family of circles this family of circles matlab all the circles satisfying the common equation what the equation is ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 now always the order depends on the number of arbitrary constants so let us divide by a to make it a general equation x square plus y square plus 2g divided by a into x plus 2f divided by a into y plus c upon a this is equal to 0 so this number 2g upon a and 2f upon a and c upon a these are constants so
let us write x square plus y square plus k1 into x plus k2 into y plus k3 is equal to 0, where k1 equal to, what is k1? 2g divided by a. What is k2? 2f divided by a. And what is k3? k3 is equal to c by a. So there are 3 arbitrary constants. How many? 3 arbitrary constants. Since the number of arbitrary constants are 3, therefore order of the differential equation is also equal to 3. Differential equation order kate hijibo 3, right? Came in 2017. If p and q are the order and degree of the differential equation, y into dy by dx the whole square plus x square d square by dx square plus xy equal to sin x. कौन दरकार? Order and degree of the relation. Then the relation between p and q. तो p is the order, q is the degree. जो differential equation होची यार order होची p और degree होची q. Now what the order of the differential equation is? Order of the differential equation is highest order. The highest order differential coefficient. The highest order differential coefficient is the order coefficient, and degree is its exponent. Degree is its exponent. But for this, the equation should be a polynomial of dy by dx, and it should be free from all the radical signs and fractions. Radical sign and fraction माने square root, cube root, एई सब नथियार अछि इक्वेशन रे. जदि थिवो प्रथम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करिए बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जदि क्यूब रूट थियो प्रथम स्क्वायर क्यूब रूट को एलिमिनेट करिए. एमिति करी स्क्वायर रूट क्यूब रूट एलिमिनेट कला पर यू विल गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन. देन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. एठी देखंतु ना स्क्वायर रूट अछि ना क्यूब रूट अछि, ये परफेक्ट गोटे पॉलिनोमियल अछि dy by dx रो. सो एई जो टर्म डा दुस x स्क्वायर इनटू d स्क्वायर x by dx स्क्वायर एई टू आपन को मिलिबो ऑर्डर. ऑर्डर इक्वल टू 2. यार यार पावर अछि 1, देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 1. So order 2 and degree 1. Now you need to write the relation between p and q. This is p, this is q. So the relation between p and q is p is greater than q. P ro value 2, q ro value 1. So p will be more than q. So this is the answer. Bujhiyala? Now come to the next question. Next question is write the order and degree order of the differential equation of the system of ellipse. Now the given equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. You need to find. आपको खाली order बाहर करियो अछि, right? Order बाहर करियो खाली प्रथम differential equation बनावा पड़ियो. You need to form a differential equation. आ differential equation बनावा पय differential equation को form करियो पय ए दुईटी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करियो पड़े. यू हैव टू एलिमिनेट दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आ केतटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अछि? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर 2. नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2. तो ऑर्डर हे जो 2. देयरफॉर ऑर्डर विल बी 2. व्हाई? बिकॉज़ टू एलिमिनेट दीस 2 a and b आपन को इक्वेशन को दुई तरह डिफरेंशिएट करियो पड़ियो. दुई तरह डिफरेंशिएट कर ऑर्डर तार 2 हे जिवो. So therefore the order of the differential equation will be 2, and that is came in the exam 2015. Okay. Now the next question. Determine the order and degree of the differential equation. What do you need to find? Order and degree. So this is d square y by dx square is equal to 2y cube plus dy by dx raised to 4 divided by square root of d square y divided by dx square. Cross multiply कर देवे. So this is d square y by dx square power 1. 80 power केते अछि? 80 power अछि 1 और 80 power अछि 1 by 2. तो जते ऐड हे जो 1 plus 1 by 2 will be equal to 3 by 2, and that is equal to 2y cube plus dy by dx raised to 4. Now a radical power to हटाए पड़ो. केमती हटेबे? स्क्वायर कर देबे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, what you are going to get? d square y by dx square raised to 3 equal to, this is 2y cube plus dy by dx, this raised to 4 and the whole square. And the whole square. Now the highest order differential coefficient is this. So order equal to 2. Order equal to 2. And the power is 3. Therefore degree equal to 3.
order equal to 2 and degree equal to 3. So this is the order and how to find the order and degree of the differential equation. प्रथम कौन को रेडिकल पावर को हटेबे रेडिकल पावर माने स्क्वायर रूट क्यूब रूट हां 3/2 एमती जो थियो ताको स्क्वायर करके या क्यूब करके हटेबे देन ओनली यू कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ये देखंतु केते वर्ष आछि 2012 रे आछि 9 रे आछि 5 रे आछि बहुत समय आछि. तो एंती टाइप रो क्वेश्चन को केबे छाडबेनी सब बोले प्रैक्टिस करबे. राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन thus. How do you find the order and degree? This is already in the form of a polynomial. So this is d cube y by dx cube raised to 1. So order will be equal to 3. Order will be equal to 3 and the power is nothing मतलब 1. Therefore degree is equal to 1. तो highest order दबो और तारा exponent कौन दबो degree दबो. Highest order कौन provide करियो order और जो term तुमको order provide करियो तार power होची degree of the differential equation. Let's move to the third question. Write the particular solution of the differential equation dy by dx equal to 1 plus x raised to 4. So dy is equal to 1 plus x raised to 4 into dx. Variable separated. Now integrating both sides. So integration of dy equal to 1 plus x raised to power 4 into dx and the integration. So this is y equal to 1 plus x raised to power 4 plus 1 5 divided by 5 plus c. Right, so this is your general solution. Is the general solution. Now you need the particular solution. So value substitute करिए general solution. Now when y is equal to 0, given when y is equal to 0, x is equal to -1. Substitute कर दो y 0, x को -1 कर दो तो +1 -1 raised to 5 divided by 5. So 0 हो गया total 0. So c equal to 0. So the particular solution is a general solution रे आपण c रो value substitute करिवे to get the particular solution. So the particular solution is y is equal to 1 plus x raised to 5 divided by 5 and plus c our 0 value होगा 0, right, which came in 2011 and 2009 and it's a textbook question. X into dy by dx plus y equal to xy square. Reduce the following to a linear differential equation. Now the linear differential equation LDE, linear differential equation, is of two types. First one is dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x or constant. So in this case, integrating factor will be e raised to integration p dx. Now the second type is dx by dy plus px is equal to q, where p and q are functions of y or constant, and integrating factor equal to e raised to integration p into dy. So either you have to convert in this form or you have to convert in this form. So look, what given is, this is given that x into dy by dx plus y is equal to x into y square. So let us divide by x. When you divide by x, what you are going to get? Dy by dx plus 1 by x into y is equal to y square. So dy by dx plus py equal to q. p मतलब y रो कोएफिशिएंट p आउ q x रो फंक्शन या कांस्टेंट हेबार अछि बट एठी कोन अछि y स्क्वायर अछि तो y स्क्वायर डिवाइड कर देबे. सो दिस इज इक्वल टू 1 by y स्क्वायर into dy by dx plus 1 by x into 1 by y is equal to y square will be equal to 1. Now put 1 by y is equal to 1 by y equal to some t. Derivative of 1 by y is minus 1 by y square into dy by dx will be equal to dt by dx. Now dy by dx को कौन लिखिबा 1 by y square into dy by dx equal to minus of dt by dx plus this is t या को हमें t कंसीडर करते this is t upon x is equal to 1 minus sign से मल्टीप्लाई कर देवे तो dt by dx minus 1 by x into t is equal to 1. This is the required linear differential equation. या को हमें कहउछन बर्नौलीज इक्वेशन आल्सो कोन कहउछन या को हमें बर्नौलीज काई एपटे जो y स्क्वायर रहगला ना ये y स्क्वायर जतल डिवाइड करिवे दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन जा को हमें linear equation फॉर्म रे कन्वर्ट कर देले, राइट. So this is the question which was came in 2011-2009 textbook question. Now write the integrating factor of the differential equation. if दरकार कोन करिया प्रथमे आकू इक्वेशन फॉर्म रे नै के आसबा तो dy by dx is equal to minus y into ln y divided by x minus ln y.
माइनस साइन को कॉमन नहीं दिया तो y इंटू एल एन वाई डिवाइड बाय एल एन वाई माइनस एक्स। तो ये तो कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आनी परिबे कहीं ना कोई भी फॉर्म ना ना dy by dx प्लस py इक्वल टू q अछि ना dx by dy प्लस px इक्वल टू q अछि। सो लेट अस अब जदी फर्स्ट टाइप रे आसुनी आकु उल्टा कर देबे आकु रेसिप्रोकल कर देबे। व्हेन यू रेसिप्रोकल इट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट dx by dy is equal to ln y minus x divided by y into ln y। ठीक अछि या को सेपरेट कर देबे ln कैंसिल हो गला 1 by y माइनस x अपॉन y इंटू एल एन वाई। x वाला टर्म को लेफ्ट साइड को लेके आसिए। सो दिस इज dx बाई dy प्लस 1 बाई y इंटू एल एन वाई इंटू x। दिस इज इक्वल टू 1 बाई y। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस px is equal to q where p and q are functions of x or constant. Now this is your p, this is your p and this is your q. Q is your 1 by x. So p is equal to 1 upon y into ln y and q is equal to 1 upon y. What do you need to find? Write the integrating factor. So what is the formula of integrating factor? Integrating factor formula is e raised to integration of p dy equal to e raised to integration of 1 upon y into ln y into dy. Y को प्रूव नहीं जानते e power this can be written as 1 by y divided by ln y ना into dy. Denominator derivative numerator अच्छे तो e raised to log ln of ln y. E of log cancel हो गया so this is equal to ln y. So this is the integrating factor. ये टाइप रो क्वेश्चन सब बोला है राइट। आगू बढ़िया। Now the next question is write an integrating factor. Again the integrating factor of the differential equation dy by this was came in 2018. Dy by dx plus py is equal to q. This is in the form of dy by dx plus py. p मतलब minus 1 by x into y equal to q. q मतलब x square plus 1. So this is your p and this value is your q, right? P is equal to minus 1 by x and q is equal to x square plus 1. So integrating factor equal to what the integrating factor is? Integrating factor equal to e raised to integration p dx. So this is equal to integration e raised to minus 1 by x into dx and this is equal to e raised to minus ln x. So this is equal to e raised to ln of x raised to minus 1. This is equal to x raised to minus 1 which is equal to 1 by x. So this is your answer. So the integrating factor is 1 by x. Write the unit vector. Write the unit vectors which makes angle of 45 degree and 60 degree with positive direction of x axis. Basics आगे कर दो बैठ। Basics कौन हो? अगर कोई लाइन जदि गोटे लाइन x axis सहित 45 डिग्री बनाऊँ सो अल्फा इक्वल टू 45 y axis संगे जो एंगल बनाऊँ दैट इज बीटा विच इज 60 डिग्री एंड द एंगल मेड बाय द लाइन विथ z axis विल बी गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन होती? डायरेक्शन कोसाइंस होती l इज इक्वल टू cos अल्फा m इज इक्वल टू cos बीटा n इज इक्वल टू cos गामा। cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये होची डायरेक्शन कोसाइन। तो यूनिट वेक्टर कौन हो? यूनिट वेक्टर इज u कैप इज इक्वल टू l इंटू आई कैप प्लस m इंटू j कैप प्लस n इंटू k कैप। सो जो वेक्टर टाको आपण डायरेक्शन कोसाइन सहित लिखिबे दैट इज यूनिट वेक्टर। आ जो डायरेक्शन रेशियो सहित लिखिबे दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स। डायरेक्शन कोसाइन सहित जो वेक्टर लिखिबे सेटा यूनिट वेक्टर। आ जो डायरेक्शन रेशियो संगे लिखिबे दैट इज ओनली वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो कोन होची? abc होची। सो a इंटू आई कैप plus b into j cap plus c into k cap. This will be written in the form of direction ratios. तो डायरेक्शन रेशियो रे कोन मिलियो? वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन रे कोन मिलियो? यूनिट वेक्टर। ए दुईटा जिंस बेसिक जिंस एटा मन रखे। अभी क्वेश्चन को आसीबा। व्हाट द क्वेश्चन सेज गिवन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब x एक्सिस सहित एंगल दिया है केते एंगल 45 डिग्री y एक्सिस सहित एंगल दिया है 60 डिग्री गामा आपन ढूंढिया पड़ो। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। कंडीशन कौन अच्छे? डायरेक्शन कोसाइन रो डायरेक्शन कोसाइन रो कंडीशन अच्छे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
and alpha is 45 degree. So this is equal to cos square 45 degree plus cos square beta, beta is equal to 60 degree plus cos square gamma, this is equal to 1. Cos 45 degree 1 by root 2, तर square होची 1 by 2, 1 by root 2 the whole square. Cos 60 1 by 2, 1 by 2 the whole square. Cos gamma, so which is cos square gamma, and that is equal to 1. So this will be 1 by 2, 1 by root 2 square है 1 by 2, 1 by 2 रो square है 1 by 4 plus cos square gamma, cos square gamma is equal to 1. 1 by 2 plus 1 by 4 add कर दियो है 3 by 4. 3 by 4 plus cos square gamma is equal to 1. So what about cos square gamma? Cos square gamma is equal to 1 minus 3 by 4. 1 minus 3 by 4 is equal to 1 by 4. And what about cos gamma? Cos gamma equal to square root of 1 by 4. And square root of 1 by 4 is plus minus 1 by 2. So unit vector कौन है जो? Unit vector is L into I cap plus M into J cap plus N into K cap. ये होची आपनकर unit vector. L into I cap plus M into J cap plus N into K cap. This is what your unit vector is. Now L रो value होची cos 45, cos 45 into I cap plus cos 60 into J cap, cos gamma तो जानते हैं हमें वैल्यू प्लस माइनस 1 by 2 इंटू के कैप. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो. दिस इज 1 by root 2 I cap प्लस 1 by 2 J cap प्लस माइनस 1 by 2 इंटू के कैप. सो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर. ठीक है जी, एटा है आंसर. दिस इज योर आंसर. करेक्ट. कौन कले अल्फा बीटा गामा होची डायरेक्शन कोसाइंस. अल्फा कौन होची cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. अल्फा बीटा गामा कौन होची एंगल. एंगल अल्फा को एंगल जोड़ा x एक्सिस सहित बनिबो दैट इज अल्फा, जोड़ा y एक्सिस सहित बनिबो दैट इज बीटा, और जोड़ा z एक्सिस सहित बनिबो दैट इज गामा. तो cos अल्फा I कैप, cos बीटा J कैप, cos गामा K कैप. दिस इज यूनिट वेक्टर. cos अल्फा को LMN कहि परियो, L into I, M into J, N into K, राइट. बट LMN यहाँ पे दिया नहीं था. एठी हमको LMN तीनटा जा जिनस दिया है. कौन कौन दिया है? एक्स एक्सिस सहित एंगल माने अल्फा दिया है, वाई सहित एंगल माने बीटा दिया है, जेड सहित एंगल हमको बाहर करिया पड़े. तापे कंडीशन कौन? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1. से थ्रू गामा बाहर करिए, गामा बाहर करिए यूज करिए. ठीक है जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is this came in 2014 exam. Write the value of alpha if the vectors a bar and b bar are parallel. दुईटा वेक्टर अच्छा और दुईटा वेक्टर पैरेलल. बेसिक जिनस कौन है? द बेसिक थिंग इज इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर. जदि दुईटी वेक्टर पैरेलल अच्छी गोटे वेक्टर को आउ गोटे वेक्टर स्केलर मल्टीपल एक्सप्रेस कर पारिबो. दैट इज ए बार इज इक्वल टू के इंटू बी बार. बी बार को ए बार सहित डिवाइड कर दियो. ए बार डिवाइड बाय बी बार विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. तो दुईटा वेक्टर रेशियो कौन हो? कांस्टेंट हो. तो दुईटा वेक्टर तो डिवाइड होबनी. कौन डिवाइड हो? कोएफिशिएंट्स डिवाइड हो. कोएफिशिएंट्स डिवाइड हो. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. लेट जदि तब वेक्टर ए बार इज इक्वल टू एमती अछि a1 into I cap plus a2 into J cap plus a3 into K cap. Let the vector a bar will be like this. b bar is equal to b1 into I cap plus b2 into J cap plus b3 into K cap. For parallel, if a bar parallel to b bar, ratio of the coefficients, I cap ro coefficients ratio, that is a1 by b1 will be equal to a2 by b2 will be equal to a3 by b3. This is the condition. A condition to मन रखिए. This is for both parallel as well as collinear vectors. अब देखो a bar कौन दिया है? Given a bar is equal to what is given 2 into I cap plus 3 into J cap minus 6 into K cap. This is A bar. And B bar is equal to alpha into I cap minus J cap plus 2 into K cap. And since condition is also given, what is the condition? A bar is parallel to B bar. It आपने दीजिए A bar parallel to B bar.
जब ए बार पैरेलल टू बी बार हम देयरफॉर कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल हम कोएफिशिएंट रेशियो माने एठी आई रो कोएफिशिएंट होची 2 and from b bar the coefficient of I is alpha, so 2 by alpha equal to j ro coefficient ratio 3 by minus 1, k ro coefficient ratio is minus 6 upon 2, so this is 2 by alpha is equal to minus 3, this also equal to minus 3, so 2 by alpha को therefore 2 by alpha is equal to minus 3 रे डिवाइड कर दिया तो alpha is equal to minus 2 upon 3, so this is the value. अगर अल्फा वैल्यू जब अल्फा वैल्यू -2/3 हम इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -2/3 देन दीज टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो कौन मन रखियो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. इंपॉर्टेंट पॉइंट ना व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. कोएफिशिएंट रेशियो कौन हम इक्वल कोएफिशिएंट माने दुईटा जो वेक्टर है आई जे के रो जो कोएफिशिएंट हम से डिवाइड करिवे तार आंसर कौन आसो कांस्टेंट आसो और से कांस्टेंट एठी हमर हे गेला द वैल्यू ऑफ अल्फा. करेक्ट. ठीक आगु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वैल्यू ऑफ m and n for which the vectors this and this will be parallel. Again parallel condition कौन हम when the vectors are parallel ratio of the coefficients are equal. coefficient ratio माने एठी i रो coefficient होची m minus 1 divided by m plus 1 will be equal to n plus 2 divided by n minus 2, k ro coefficient 4 divided by 8. Now what is 4 by 8? 4 by 8 will be equal to 1 by 2. m minus 1 by m plus 1 is equal to 4 by 8, that is 1 by 2, and similarly n plus 2 by n minus 2, this is also equal to 1 by 2. Cross multiply कर दियो 2m minus 2 ये 2 डबल a3 multiply है जो ये 1 आसी a3 multiply राइट. तो 2m minus 2 equal to m plus 1, m को लेफ्ट साइड नहीं जो 2m minus m is equal to 1 plus 2 will be 3, 2m minus m is m is equal to 3. Again cross multiply करो a2 2n plus 4 n minus 2, 2n minus 2 equal to minus 2 minus 4 will be minus 6, 2n minus n है ना 2n minus n will be equal to n and n is equal to minus 6. एटा होची n. This is 2n minus n equal to minus 6 which is n equal to minus 6. तो m और n कितना आ गया m3 and n is equal to minus 6. करेक्ट. जदि दुईटा वेक्टर पैरेलल हो कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल हो तो m और n एटा पचार थिला m कोन और n कोन m is 3 n is minus 6. So this is your answer. This is came in 2011. छोटे छोटे क्वेश्चन किंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक एक मार्क क्वेश्चन ईच 1 मार्क क्वेश्चन. इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर तो ए रो पोजीशन वेक्टर हेगला ए बार बी रो पोजीशन वेक्टर बी बार और सी रो पोजीशन वेक्टर हेगला सी बार. प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. एटा प्रूफ करियर अछि. कोलिनियर माने कोन हबो वन वेक्टर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर. एटा प्रूफ करियर. सो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बार. सो व्हाट इज ए बी बार? ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार. तो बी माइनस है एमती माइनस करिए. देखो 3i minus 2i, 3i minus 2i will be I, minus 2j minus j will be minus 3j, k plus k will be 2 times k. This is AB bar. Now try to find the value of BC bar. BC bar केमती बाहर करिए C bar minus B bar, and C is this I minus 3i. I minus 3i will be minus 2i. 4j plus 2j, 4 plus 2 will be 6j, minus 3 minus k तो minus 4k. देखो या को ए बी रो स्केलर मल्टीपल रे एक्सप्रेस करियो तो ए2 -2 कॉमन नै दिबे जतले -2 कॉमन नै जे दिस विल बी आई कैप -3 इनटू जे कैप +2 इनटू के कैप. केते कॉमन नेबे टिके ट्रिकी देखिबे. एठी आई कैप दरकार. एठी -2 आई कैप अछि. कोन बाहर कले आई कैप मिलिबो -2 तो -2 कॉमन नै गेल. सो दिस कैन बी रिटन एज -2 इनटू दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी बार. सिंस वन वेक्टर इज एठी हम कोन कले गोटे वेक्टर को आ गोटे वेक्टर रो स्केलर मल्टीपल रे एक्सप्रेस कर देल. जदि एमती करि पारिबा इफ वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. came in 2010. एथी खाली प्रूफ करे रच. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज
Second question is write the unit vector along p q bar joining p and q. तो p और q को join करिवा वेक्टर रो यूनिट वेक्टर दरकार मतलब p q cap. And what is p q cap unit vector मतलब vector divide by its own magnitude. वेक्टर को तारा निजर magnitude रे divide करिवे. So for that एटा करिवा पाए this is your answer. एटा आपनु करियार अछि. जदि एटा करिवार अछि सेति पे कोन करिवे p q bar बाहर करिवे. So given what is p and what is q? Given p, the coordinate of p is 7 minus 4 5. Therefore p bar is the position vector. So 7 into I cap minus 4 into j cap plus 5 into k cap. This is p bar. And q is given as 7 1 and 5. Therefore q bar is equal to 7 into I cap plus j cap plus 5 into k cap. Therefore pq bar is equal to q bar minus p bar. तो q minus p कर देवे 7 minus 7 कितने गला 0 into I cap. j minus of minus तो plus हो गला. तो 5 into j cap. 5k minus 5k will be 0 into k cap. So it is only 5 into j cap. Only 5 into j cap. So this is pq bar. Now how do you get the magnitude of pq bar? Magnitude किंतु बाहर करिए. I रो coefficient square that is 0. j रो coefficient square that is 5 का square. k रो coefficient square 0 रो square. Square root equal to 5. दुटा तो 0 आउ मिडिल टर्म टा 5 अछि 5 रो स्क्वायर 25 आउ स्क्वायर रूट कर देले 5 हेजु. Therefore the unit vector along pq bar is pq cap, which is equal to pq bar divided by pq bar रो magnitude. तो pq bar केते हैला pq bar हैला 5 into j cap, magnitude हैला 5 5 cancels. So this is j cap. So ये आपनकर आंसर बुझिया. तो एटा होछि बेसिक्स. ये होछि फार्मूला. यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. कोई भी वेक्टर जे कोनोसी वेक्टर आपन दिया है तार जदि यूनिट वेक्टर पचारियो कोन करिए सेही वेक्टर को तार मैग्नीट्यूड रे डिवाइड कर दो. The direction cosines of the vectors p q bar where p op is this and oq is this. Direction ratio पहले प्रथम कौन करिए डायरेक्शन रेशियो बाहर करिए. So given p रो कोऑर्डिनेट केते देछि 1 0 माइनस op माने p bar, right? So therefore p bar is equal to I cap plus 0 into j cap minus 2 into k cap. This is p bar. And what is q? Q is given as 3 minus 2 and 0. Therefore the position vector of q is q bar, which is equal to 3 into I cap minus 2 into j cap plus 0 into k cap. Therefore pq bar will be equal to q bar minus p bar. Q bar minus p bar, which is this minus this. 3i minus I will be equal to 2 into I cap minus 2j minus 0j. So minus 2 into j cap. 0 minus of minus, so plus 2 into k cap. This is pq bar, right? Now therefore DRS direction ratios. DRS मतलब direction ratio. Direction ratio कौन हो? जो वेक्टर मिलियो ते सेतिर I j k रो जो कोएफिशिएंट्स होचे those are the direction ratio. तो एठी I रो कोएफिशिएंट हेगला 2, j रो कोएफिशिएंट हेगला -2, k रो कोएफिशिएंट हेगला +2. Direction ratio. Direction cosine रो फार्मूला कौन होची? Direction cosines are L is equal to A divided by square root of a square plus b square plus c square. M is equal to b divided by square root of a square plus b square plus c square. And n is equal to c divided by square root of a square plus b square plus c square. Right? ऊपर लिख दो. Therefore L is equal to a माने कहते हैं 2. 2 divided by 2 square is 4 minus 2 square is again 4. 2 square is 4. So the square root. M is equal to minus 2 divided by square root of 4 plus 4 plus 4, and n is equal to 2 divided by square root of 4 plus 4 plus 4. So this is equal to 2 divided by square root of 12. M is equal to minus 2 divided by square root of 12, and n is equal to 2 divided by square root of 12. So this is equal to 2 by 2 root 3 minus 2 by 2 root 3,
and this is 2 by 2 root 3. 2, 2, 2, 2 and 2, 2 gets cancelled. So direction cosines are 1 upon root 3 minus 1 upon root 3 and 1 upon root 3. These are the answers. ठीक है? डायरेक्शन रेशियो माने वेक्टर कोफिशिएंट, डायरेक्शन कोसाइन माने यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट. डायरेक्शन रेशियो जदि ए बी सी अच्छी डायरेक्शन कोसाइन आने फॉर्मूला एटा. दिस द फॉर्मूला टू गेट द डायरेक्शन कोसाइन्स. डायरेक्शन कोसाइन आने फॉर्मूला ए बी सी यूज कर दे. ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर नथले यूनिट वेक्टर बाहर कर दे तार कोफिशिएंट लिख दे. सेम डायरेक्शन कोसाइन्स आर ऑलवेज द कोफिशिएंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन रेशियोस आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेक्टर. ओके, ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बोल एंतिया क्वेश्चन आसे. इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, ए बार इज बी प्लस सी, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी क्रॉस सी. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. नाउ ए बार वैल्यू कौन देते अपन को? बी प्लस सी. बी प्लस सी इज ए बार, बी क्रॉस सी. So this is equal to b dot distributive property apply करछे. b dot b cross c. प्रथम b dot b cross c, then c dot c cross, then c dot b cross c. Right? तो b dot b cross c कौन हम? द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a dot b cross c जमती हो b dot b cross c, बट एठी दुईटी रिपीटेड वेक्टर b bar and c bar प्लस c bar b bar and c bar. जदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रे दुईटी वेक्टर रिपीटेड होचे, जेमते एठी दुईटा रिपीटेड एठी दुईटा रिपीटेड. इफ एनी टू वेक्टर्स इन एनी टू पोजीशंस, दुईटा वेक्टर कोई भी दुईटा पोजीशन रे जदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रे आइडेंटिकल होचंती, देन द आंसर विल बी 0. So 0 plus 0 will be equal to 0. So this is the answer of the first question. Now come to the second one. Next question बुझिबा. Next question is a cross b the whole square plus a dot b the whole square equal to 144. Then write the value of ab. So look, given a bar cross b bar the whole square plus a bar dot b bar the whole square, this is equal to 140. A cross b is a bar b bar sin theta the whole square. A dot b is a b cos theta, a b cos theta the whole square, and this is equal to 144. Right? तो a square ये वाला a square b square sin square theta. जितने स्क्वायर लिखिए ना मैग्नीट्यूड लिखिए दरकार नहीं. दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 144. कौन कॉमन आसला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आसगला. ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1. सेटा 1 होगला. सो दिस इज इक्वल टू 144. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 कर देले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू इक्वल टू 144. सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो a into b equal to square root of 144 and that is equal to 12. Plus or minus लिखिए नहीं कहीं वेक्टर रो मैग्नीट्यूड माने always positive, length of the vectors are always positive. So you can use this as a formula also. Formula कौन होची? a cross b the whole square plus a dot b the whole square, this is equal to a square b square, this is equal to a square b square. एटा एज ए फॉर्मूला भी आप यूज कर पारे. मुझे ये डिराइव करदेली आप एज ए फॉर्मूला यूज कर पारे. जब आगू को सम प्रॉब्लम आछे सो यूज दिस एज ए फॉर्मूला. राइट? ए क्रॉस बी द होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी द होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर जिते लिखे मैग्नीट्यूड लिखा दरकार नहीं कहीं ए स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर. राइट? कहीं से ऑलरेडी लेंथ माने मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ऊपर बार लिखा दरकार नहीं. ना लुक नेक्स्ट वन. A bar का magnitude, the magnitude of A bar is 3, magnitude of B bar is 2, A dot B is 0, then write the value of A cross B. So I have already told you, मैं एबे कहती ना A cross B रो square plus A dot B रो square, A dot B रो square is equal to A square B square. Just पूर्व क्वेश्चन में सॉल्व करते. Now A cross B आपन मानिबार अछि तो keep it as it is. एटा को फाइंड करियर अछि ना. लुक, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b. एटा को एज इट इज रख दियो. a क्रॉस b वैल्यू इज गिवन इज 0, सो दिस इज 0 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. a इज 3
3 square, B is 2 and 2 square. So this is A bar cross B bar, the whole square equal to 3 square is 9, 2 square is 4, 9 into 4 will be 36. Now this is the square of A cross B. Now you need to find the value of only A cross B. If only A cross B anywhere achi, take the square root. Take the square root. So this is equal to square root of 36 and that is equal to 6. So this is your answer. Now the previous formula we use kar dile, this is the formula which we have used. A formula use kar dile. Write a vector normal to this and this. Normal vector means the vector which is perpendicular to A bar and B bar. मान लियो let A bar is equal to जोड़ा first vector दिया है ताको A bar नहीं जानते, A bar is equal to I plus K and B bar will be equal to I plus J. The vector normal to both A bar and B bar is A bar cross B bar. The vector normal to, that is perpendicular to. नॉर्मल टू मतलब ब्रैकेट रे मु लिख दूची परपेंडिकुलर टू, यार मतलब से अब जदि को वेक्टर दुईटा वेक्टर नॉर्मल वेक्टर माने दुईटा वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होची तार कथा होची, राइट. सो द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A bar and B bar is same as the normal vector of A bar and B bar. So the vector normal to or perpendicular to both A bar and B bar is A bar and B bar is A bar cross B bar. That is A bar cross B bar equal to केंद्र बाहर करें determinant ना. First row is I, J, K. इटे I रो coefficient 1, J नहीं 0, K रो coefficient 1, I रो coefficient 1, J रो 1, K नहीं तो K रो coefficient 0. So this is equal to I cap into 0 minus 1. Determinant तो solve करें minus J cap into 0 minus 1 and plus K cap into 1 minus 0. So this is equal to minus into I cap, minus minus plus J cap and plus K cap is the normal vector. So ये 2011 रास्ते and this is a textbook question. So बोले मन रखे जो normal vector कथा होची माने perpendicular vector कथा होची. The vector which is perpendicular to both A and B is same as the normal vector of A bar and B bar. तो normal vector में cross product नहीं. So let's move to the second question. Find the area of the parallelogram which diagonals are the vectors this. Look, if जदि गोटे vector parallelogram अछि जरा diagonal अछि D1 and D2 with given diagonals, area of the diagonal, area and your formula अछि half of magnitude of D1 bar cross D2 bar. This is with given diagonals. जदि side दिया है, if A bar and B bar are the adjacent sides, then area equal to only cross product of A cross B. जदि डायगोनल अच्छे हाफ रे मल्टीप्लाई करिवे, डायगोनल थ्रे हाफ रे मल्टीप्लाई करिवे नाही. करेक्ट. सो लेट्स मूव. गिवन D1 डायगोनल 1 ना, डायगोनल 1 is equal to 3 I cap plus J cap minus 2 K cap. This is D1 bar and D2 bar is equal to I cap minus 3 into J cap plus 4 into K cap. This is D1 and D2. Now find the value of D1 cross D2. Find the value of D1. How do you get the cross product? By using a determinant I, J, K. Now in D1, the coefficients are 3, 1 and minus 2. In D2, this is 1, minus 3 and 4. Now let us solve this. So this is equal to I cap into 4 minus 6. 4 minus 6 will be minus 2. Minus J cap into 12 plus 2. 12 plus 2 will be 14. Plus K cap into minus 9 minus 1 will be minus 10. So this is equal to minus 2 into I cap, minus 14 into J cap, minus 10 into K cap. Now let us find the magnitude of this. D1 bar cross D2 bar the magnitude. Minus 2 का square. Magnitude के बाहर करिए. I, J, K रो coefficient रो square अवतारा root. Minus 2 square, minus 14 square, then minus 10 का square and the square root. Minus 2 square will be 4. This is equal to 4 plus 14 square is 196, 10 square is 100. So 196 plus 4 will be 200 plus 1 will be 300 and square of 300 can be written as 100 into 3. 100 into 3, root of 100 will be 10, 10 root 3. So this is D1 cross B2. Therefore area of the parallelogram is area of the parallelogram. Parallelogram. This is area of the parallelogram is half of D1 cross
d to the magnitude. This is when the diagonals are given. जो area देइथिबो same formula खाली half रहिबोनी a cross b हेजिबो. So this is half of 10 root 3. 2 रे cancel कर दियंतु. This will be 5 root 3. This is the answer. Area is तो square units लिखते हैं. Right? This was came in 2011. Then that is again a textbook question. So let's move to one more question. Time pass बिल्कुल करिबा नहीं. Exam पाकर अछि. तो rigorously पढ़िबा. Determine the value of m for which the following vectors are orthogonal. So let us understand what is orthogonal. Orthogonal is nothing but perpendicular. Orthogonal is perpendicular vectors. If two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. So a bar dot b bar equal to 0 if and only if a bar perpendicular to b bar. What is if and only if? माने दुईटा जगह हो. दुईटा जगह माने कौन हो? जदि दुईटी वेक्टर परपेंडिकुलर से मानकर डॉट प्रोडक्ट 0. उल्टा कहिबे जदि दुईटी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट 0 दे आर परपेंडिकुलर. So in both ways, right? So here is given, let a bar vector consider कर दो. A bar equal to m plus 1 into I cap plus m square into j cap minus m into k cap. Let this will be a bar, and b bar is the second vector, m square minus m plus 1 into I cap minus m into j cap plus k cap. A bar and b bar, these are perpendicular. जदि perpendicular अच्छे, therefore their dot product is 0. से मानकर dot product कौन हो? 0. जो dot product केंजे बाहर करिवे? I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1, remaining all are 0. तो I रो coefficient m plus 1 into this is m square minus m plus 1. M square into minus m will be minus m cube, minus m into 1 will be minus m, and this is equal to 0. Multiply कर दियंतु. m into m square will be m cube minus m square plus m square minus m plus 1 minus m cube minus m equal to 0. Minus m cube plus m minus m gets cancelled. Minus m square gets cancelled. Minus m को right side ले लीजिए, m equal to 1. ओहो बहुत इजी क्वेश्चन था. देखिए लगुला बड़ कैलकुलेशन हो किंतु एक मात्र क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया. Right? So this was came in 2011 question. If the distance between the points, a point टाको x1, y1, z1 consider करंतु और ये point टाको x2, y2, z2. ये दीटा point भितर distance देछि 2 units. z आपनु फाइंड करिया अछि. तो distance between a and b. If the first point is a, second point is b, distance between a and b is x2 minus x1 the whole square. एटा formula y2 minus y1 the whole square and plus z2 minus z1 the whole square. यार square root. Given कौन अच्छी? Given distance 2 अच्छी. So 2 is equal to 1 minus of minus 1 will be plus 1 whole square plus minus 1 minus of minus 1 plus 1 the whole square plus 1 minus z whole square. अब यार square root. Square कर दिए तो दीटा जा साइड. Left side square है गला plus 4. Right side square है गला. Square root cancel है जो first. Then 1 plus 1 2, 2 square is 4, minus 1 plus 1 0, 0 square is 0, plus 1 minus z the whole square. Now this 4 gets cancelled. So 1 minus z the whole square equal to 0. So 1 minus z is equal to 0. So z is equal to 1. This is the first question. Then find the value of z and z equal to 2. If a line in the space makes angles alpha, beta, gamma with the coordinate axis. गोटे लाइन अच्छी जो x axis सहित alpha angle बनुची, y axis सहित beta और z axis सहित gamma. Find the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Now look, if a line makes an angle of, since a line makes angles of, जदि गोटे लाइन x एक्सिस सहित अल्फा एंगल बने, y सहित बीटा और z सहित गामा, देन कौन अच्छे? डायरेक्शन कोसाइन से जो l इक्वल टू cos अल्फा, m इक्वल टू cos बीटा, n इक्वल टू cos गामा, एंड l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. एक कॉन्सेप्ट को यूज करिए. राइट? ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ
line makes angles of alpha, beta and gamma with coordinate axis. With coordinate axis माने x, y and z axis. Coordinate axis. Therefore condition कौन है? Therefore condition equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and this will be equal to 1. Consider this as equation 1. Now you need to find the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. This is the value you need to calculate. Now cos alpha can be written as 2 cos square alpha minus 1. Cos 2 beta can be written as 2 cos square beta minus 1. Cos 2 gamma can be written as 2 cos square gamma minus 1. Cos 2 alpha formula use कर दे in terms of cos alpha. Now sin square alpha can be written as 1 minus cos square alpha. Sorry, sin square alpha can be written as 1 minus cos square alpha. Plus this is 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma. Add कर दो minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 cancel होगा. 2 cos square alpha minus cos square alpha will become cos square alpha. 2 cos square beta minus cos square beta will become cos square beta. 2 cos square gamma minus cos square gamma, तो ये बने जो cos square gamma. Now ये आमु जाना अच्छे. We know that from equation 1 cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. This is your answer. Okay. ये गोटे कनसेप्ट. जदि गोटे लाइन x एक्सिस सहित अल्फा एंगल बनेबो, y एक्सिस सहित बीटा और z एक्सिस सहित गामा एंगल बनेबो, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कोन होबो 1. एटा को यूज फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइन. व्हाट आर द पॉइंट्स? द पॉइंट्स आर लाइक 1 2 and 3 and -3 4 and -5. These are the points, are the given points. Given points divided by xy plane. क्या divide करछे xy plane? Let xy plane divides in the ratio k is to 1. xy plane divides in the ratio k is to 1. Therefore point केते हबो? Internal division formula x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये k is to 1 ये रेशियो. तो ये m और ये n. m x2 मतलब -3 into k plus n x1 divided by m plus n. m y2 4k 1 into 2 will be 2 divided by k plus 1. m z2 तो -5k plus 3 divided by k plus 1. So this is the point. ये पॉइंट अगला इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा दिला हमें. अब क्या डिवाइड करते हैं? xy प्लेन डिवाइड करते हैं. सिंस xy प्लेन डिवाइड्स y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. सिंस xy प्लेन डिवाइड्स therefore z कोऑर्डिनेट इज 0 इक्वल टू 0. xy प्लेन डिवाइड करो जो प्लेन डिवाइड करो सही कोऑर्डिनेट रहो, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट 0 हो. तो 8 z कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो -5k plus 3 divided by k plus 1 is equal to 0. So -5k plus 3 equal to 0. So 5k is equal to 3 and k is equal to 3 by 5 or 3 is to 5. 3 is to 5. This is the ratio. आ गोटे शॉर्टकट भी अच्छे. जदि xy प्लेन डिवाइड करिवो शॉर्टकट होचे -z1 upon z2. दिस इज द रेशियो. दिस इज द रेशियो. जदि yz प्लेन डिवाइड करिवो कोन 9 x9 तो रेशियो होगला -x1 upon x2. आ जदि zx प्लेन डिवाइड करिवो रेशियो होगला -y1 upon y2. एटा मन सॉल्व करे दरकार नहीं. जदि एंट्रेंस एग्जाम रासो डायरेक्ट लिख पारे. एटी कोन देथिले क्वेश्चन xy प्लेन डिवाइड करछे तो आंसर केते हिजो -z1 by z2. तो -z1 मतलब -3 डिवाइड बाय -5. 3 माइनस माइनस कैंसिल हो 3/5. देखो आम जो सॉल्व करके आने इंटरनल डिवीजन रे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आने एंड क्योंकि एक्स वाई प्लेन डिवाइड करथला जेड कोऑर्डिनेट को 0 कले सॉल्व कला मत पर मते 3/5 आसला. डायरेक्ट लिखले 3/5 आसो. जदि एमसीक्यू अछि डायरेक्ट लिख पारे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंट्रेंस बेस रे जदि आंसर लिखियो पड़ियो सॉल्व करियो. चलो बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. दुईटा पैरेलल प्लेन अछि भितर डिस्टेंस आपन दरकार. फार्मूला होछि d1 - d2 d1 - d2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
a square plus b square plus c square. This is the formula to find the distance between two parallel planes. Duity parallel plane ro bhitere distance and formula eta provided the planes are in the form of a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0. ये first and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. जदि दुईटा प्लेन रो इक्वेशन एमती अछि then they are parallel. Then they are parallel. केमती जना पड़ियो से माने parallel काहे ना x y और z रो कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन रे and x y और z रो कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन रे इक्वल अछि. If they are equal then the planes are parallel. If the planes are parallel then this is the formula to get the distance between two parallel planes. Now what is d1? एठी देखो 4 एठी होछि d1 ये होछि d2. So 4 minus 8 divide by या जदि तुम इक्वेशन को एमती लिखियो 2x minus y plus 3z minus 4 equal to 0 standard form रे and this is also 2x minus y plus 3z minus 8 equal to 0. तो d1 minus d2 मतलब minus 4 minus of minus 8 will be plus divide by square root of x रो कोएफिशिएंट 2 रो स्क्वायर y को कोएफिशिएंट minus 1 रो स्क्वायर z रो कोएफिशिएंट 3 रो स्क्वायर. अब mod काहे ना distance is always positive. 8 minus 4 will be 4, 2 square 4, 1 square 1, 3 square 9. So this is equal to 4 divided by root 9 plus 4, 13 plus 1. This units 4 by root 14 units. Formula खाली मन रखिए. आ गोटे कथा जदि x y z रो कोएफिशिएंट इक्वल नाही देन फॉर्मूला यूज करि परिबेनी. प्रथम x y z रो कोएफिशिएंट को इक्वल करिवे देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला. Okay. Now write down the equation of the plane perpendicular to y axis. If it is perpendicular to y axis, plane perpendicular to y axis. Y axis को perpendicular that is parallel to zx plane. Parallel to zx plane. जदि zx plane को parallel होची then equation of plane क्या होगा? Equation of plane है जो y equal to constant. Equation of plane will be y equal to constant. देखो मु कौन कौन करी y axis को parallel अछि सॉरी y एक्सिस को परपेंडिकुलर अछि जदि y एक्सिस को परपेंडिकुलर हबो आ गोटे प्लेन कोन रहला zx प्लेन को पैरेलल हे जो zx प्लेन को पैरेलल हेले इक्वेशन हेला y इक्वल टू कांस्टेंट आ ये को पॉइंट रो पास करछि ये इक्वेशन ए करी रखो सिंस इट इज पासिंग थ्रू को पॉइंट रो पास करछि पासिंग थ्रू 0 -2 0 y जगह -2 लिखिए -2 इक्वल टू k तो k रो वैल्यू आसिला k रो वैल्यू इक्वेशन ए रे सब्स्टिट्यूट कर दे using in equation a जब a रे सब्स्टिट्यूट करिवे तो y इक्वल टू केते हेगला k is -2 को लेफ्ट साइड ने किया आसबे y plus 2 equal to 0. So this is the equation of the plane. एटा आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन एक मार्क में सफिशिएंट. राइट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स. दुईटा प्लेन रो इक्वेशन दिया है आ प्लेन रो इक्वेशन को फॉर्म रहउछ a into x plus b into y plus c into z plus d is equal to 0. तो डायरेक्शन रेशियोज आनिबे प्रथम. डायरेक्शन रेशियोज of first plane. Direction ratios होचे x y z रो कोएफिशिएंट x रो कोएफिशिएंट 3 y रो कोएफिशिएंट -5 z रो कोएफिशिएंट 2 and direction ratios of second plane रो 2 4 and 7 2 4 and 7 ठीक अछि. Now let theta be the angle between the planes. Let theta be the angle between the planes. Formula the same. Angle जोटा line पे अच्छे से डायगा plane पे. Angle between the planes. Therefore cos theta equal to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So this is the formula to get the angle between the planes. So cos theta equal to a1 a2. So 3 into 2. This will be 3 into 2 plus minus 5 into 4 plus 2 into 7. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square 3 square 9 5 square 25 2 square 4 into square root of 2 square 4 4 square 16 7 square 49. ठीक है. तो न्यूमरेटर कितना न्यूमरेटर हेगला 6 minus 20 plus 14 20 minus 20 हेगला 0 है ना. डिनोमिनेटर जहाँ से न्यूमरेटर 0 हेगला माने 0 हेगला cos थीटा 0 माने थीटा इक्वल टू
pi by 2 माने planes are perpendicular to each other. Planes are perpendicular to each other. Why? Because the cos theta is 0. ठीक है, perpendicular to each other. So this is the first question. खाली डायरेक्शन रेशियो बाहर करी. व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z इन द इक्वेशन. तो प्रथम इक्वेशन कोन आसला 3 minus by 2. सेकंड इक्वेशन रो आसगला 2 4 and 7. cos थीटा रो फार्मूला लिखले a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर plus b1 स्क्वायर plus c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर plus b2 स्क्वायर plus c2 स्क्वायर. देन यूज करला. अब cos थीटा 0 आसला. cos रो वैल्यू केबे 0 होची? जतले थीटा 90 होची. सो एंगल हेगला 90 डिग्री. So that was the first question. Now come to the second one. What are the direction cosines of the straight line normal to the plane? Plane equation दिया है. Okay. So direction ratios of the normal are normal to direction ratio कितना गला 2 1 और 2. ये direction ratio. Direction cosine रो formula कौन होची? Direction cosines are L is equal to A divided by square root of a square plus b square plus c square and m is equal to p divided by square root of a square plus b square plus c square n equal to c divided by square root of a square plus b square plus c square. तो l equal to 2 2 divided by square root of 2 square 4 1 row square 1 2 square 4 माने 2 by 3. m is equal to 1 divided by 4 plus 1 plus 4 माने 1 upon 3. And n is equal to 2 divided by square root of 4 plus 1 plus 4 माने 2 by 3. Therefore direction cosines are 2 by 3, 1 by 3 and 2 by 3 respectively. These are the direction cosines. Okay. So ये थिला आपन second question. Now come to the third question. Equation of the plane which passes through this. कोटू पास करिवो 1, 1, 2 and parallel to this. जदि याकू parallel हबो एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट सेम रहबो, खाली कांस्टेंट टर्म अलग है. हां तो देखो गिवन प्लेन इज, जो प्लेन आपन दिया है सेटा कोन? गिवन प्लेन इज x plus 2y minus z equal to 5. Therefore equation of plane parallel to this is, equation of the plane parallel to the given plane is कोन जो x plus 2y minus z equal to k है जो. So that is x plus 2 खाली constant बदली नुआ constant है गला minus k equal to 0. And since it passes through the point 1 1 2, point को satisfy कर देवे. Since passes through the point, को point to pass करछु 1, 1, 2. Therefore ये point या को satisfy करे. तो x जगह लिखिवा 1, 2 into y जगह 1, z जगह 2 minus k equal to 0. तो plus 2 minus 2 cancel हो गया. तो k equal to 1. एटी यूज कर दे using k in equation a. Equation a रे k को यूज कर दे. So that will be x plus 2y minus z minus k and k equal to 1 and that is equal to 0. This is the equation of the plane. So बोल मन रखी गोटे प्लेन इक्वेशन दिया है आ गोटे प्लेन ताको पैरेलल होछि. माने कोन हो x y z रो कोएफिशिएंट सेम रो, सिर्फ कांस्टेंट अलग है जो. तो कांस्टेंट में एथि k थिला 85 थिला, हमें k कर देल. तापर कांस्टेंट फाइंड करिया पे कोन ना कोन कंडीशन दे. एडी कोन कंडीशन दिया हितला कि प्लेन ए पॉइंट रो पास करछि. जदि ये प्लेन पॉइंट रो पास करियो, ये पॉइंट रो कोऑर्डिनेट प्लेन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो. तो x जगह रे 1, y जगह रे 1, z जगह रे 2 सब्स्टिट्यूट कर देले. वी गॉट द वैल्यू ऑफ k. आ k को नहीं कि इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देले. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वैल्यू ऑफ k. अब k रो वैल्यू लिखिवा करछि सच दैट द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन. ये जो लाइन अच्छी, जो गिवन लाइन अच्छी, लाइन रे इक्वेशन आपन दिया है सिमेट्रिक फॉर्म रे x minus 4 upon 1 equal to y minus 2 upon 1 equal to z minus 1 upon 2 lies in the plane this. जदि ये लाइन ए प्लेन ऊपर रहियो तो लाइन रो सब पॉइंट प्लेन को सैटिस्फाई करियो. हां देखो गिवन लाइन इज x minus 4 by 1 equal to y minus 2 by 1 equal to z minus k by 2. ये लाइन रो जो पॉइंट अच्छी, पॉइंट कौन है x minus x1 माने x1 रो 4, y minus y1 2, z minus z1 माने k लाइज ऑन द प्लेन. ये जो लाइन टा अछि प्लेन ऊपर अछि, माने लाइन जो पॉइंट रो पास करछि से पॉइंट टी प्लेन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो. लाइज इन द प्लेन. प्लेन इक्वेशन कौन दे छै 2x minus 4y
plus z is equal to 7 जदि एमती हम therefore 4 2 k 4 2 k must satisfy so plane equation को satisfy करियो must satisfy to the plane प्लेन को सेटिस्फाई करियो माने 2 into x जगह लिखियो 4 minus 4 into y जगह 2 plus z जगह k equal to 7 2 into 4 हेगला 8 minus 8 8 minus 8 plus k is equal to 7 8 minus 8 कैंसिल हेगला therefore k is equal to 7 एकदम बेसिक समझिला कहथिला गोटे लाइन गोटे प्लेन ऊपर अछि जदि लाइन टा प्लेन ऊपर रहयो लाइन रे ऊपर जेती पॉइंट अछि सब गुडा पॉइंट प्लेन रे ऊपर रहयो माने लाइन जो पॉइंट रो पास करछे से पॉइंट टा भी प्लेन रो इक्वेशन को सेटिस्फाई करियो जदि सेटिस्फाई करियो लाइन को पॉइंट रो पास करछे देखो 84 82 80 के से पॉइंट टा उनेगी प्लेन रो इक्वेशन रो सेटिस्फाई कर दे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इक्वेशन ऑफ लाइन point given 4 minus 6 and 1 this is the point given line is line equation कौन अछि given equation of the line is line equation अछि x minus 1 divided by 1 equal to y plus 2 divided by 3 equal to z minus 1 divided by minus 8 अछि line equation हमरो जो required line टा जो line रा हम equation आनी हो चाहू छे से line टा a given line को पैरेलल अछि जदि दुटा लाइन पैरेलल होबे देन दुटा जाकर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हेबे और इक्वल हेबे तो डीआरएस ऑफ लाइन का कोन अछि डीआरएस माने इस तळर वैल्यू काहे ना लाइन सिमेट्रिक फॉर्म रो अछि डीआरएस ऑफ द लाइन आर डीआरएस कोन होला 1 3 एंड -1 एटा होछि ए लाइन रो डीआरएस जदि एटा लाइन रो डीआरएस हो तो रिक्वायर्ड लाइन रे भी डीआरएस यही हो काहे कि ना रिक्वायर्ड लाइन याको पैरेलल अछि देयरफॉर डीआरएस ऑफ the parallel line or required line DRS of the parallel line are the same 1 3 and -1 तो यही DRS जो given line रो DRS है सेहीटा ही हमरो required line रो DRS हो तो equation of line कोन हेजबो equation of the line is symmetric form रे लिखबे x minus x1 upon a will be equal to y minus y1 upon b will be equal to z minus z1 upon c so therefore x minus x1 माने 4 divided by a माने 1 equal to y minus of -6 plus 6 divided by 3 equal to z minus 1 divided by -1 this is the equation of the plane एटा होछ लाइन इक्वेशन जे गिवन लाइन को पैरेलल होबा आ जो पॉइंट दिया है कौन सा पॉइंट 4 -6 और 1 या को सेटिस्फाई करो ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x is equal to y equal to z with the plane thus देखो गिवन लाइन है लाइन और प्लेन रो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन लाइन इज x is equal to y is equal to z so it can be written as x by 1 equal to y by 1 equal to z by 1 let this will be equal to k तो x is equal to केते हेगला x is equal to k y is equal to k and z is also equal to k since x comma y comma z lies in plane also तो प्लेन को सेटिस्फाई करियो प्लेन also therefore प्लेन रो इक्वेशन कोन अछि x plus 2y plus 3z अछि x जगह रे k y also equal to k and z also equal to k and that will be equal to 6 तो 3k plus 2k 5k plus k 6k will be equal to 6 and k is equal to 1 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोन थिला पॉइंट थिला हमरो k दिस इज द पॉइंट एटा पॉइंट थिला ना xyz अब k रो वैल्यू 1 हेगला 1,1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने एटा कोथरो पॉइंट लाइन रो भी यही पॉइंट और प्लेन रो भी यही पॉइंट दुईटा जा को सेटिस्फाई करला वाला कॉमन पॉइंट